No, I hope I'm audible now. Great, awesome. Welcome everyone to today's FI session. It's on product development, and we have a very impressive panel of mentors here today. So for a bit of an overview, I'll start by introducing the mentors just as a brief overview, and then I'll ask each of the mentors to introduce themselves. To start off, we have Mr. Sarfaraz Arshid, who has 9 years of experience revolving around project management and business development. Then we have Mr. Muhammad Ahmed, an engineer turned entrepreneur with extensive experience in the field of R&D in engineering and integrated systems. We have joining us virtually Mr. Khurram Agha, with a wealth of experience from his previous roles at Telenor Microfinance Bank, Faisal Bank, and First Data Corporation. And last but not at all the least, Mr. Kamran Khan, who we all know, an expert in technology, product management, and tech startup launch with over 20 years of experience in the aviation, IT, telecom, and real estate sector. So without further ado, I'll ask each of the mentors to give a bit of a deeper introduction of themselves, starting with Mr. Khurram Agha. If you could please unmute yourself. Assalamualaikum, Assalamualaikum everyone. I hope I'm audible. Yes, loud and clear. Okay. Thank you. My name is Khurram Agha. Basically, I've been associated with the payments industry for almost about 30 odd years now, starting from when modems used to, ching, 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 and then transactions used to move. My experience has been around the Pakistan industry. Plus, at the same time, I've had the privilege to work with our Chinese counterparts at Alipay. So do have a very deep understanding of what startups are, how do you scale them up, and what are the challenges that you'll be facing. Thank you, Khurram Saab. Moving on, we'll start with Mr. Sarfaraz Arshid. So, सबसे पहले तो आई एम फाउंडर इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट माई सेल्फ, तो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं एक ज़माने में हम भी बैठे हुए थे यहाँ पे। उसके बाद एक कंपनी जो टॉक हेल्थ के नाम से मैं फाउंडर इंस्टीट्यूट से ही एक्सेलरेशन ली, उसको मैंने सेल किया कुछ अर्सा पहले टू अ कंपनी इन द यूएई। करते हम बेसिकली डिजिटाइजेशन थे, ERPs बनाते थे हम हेल्थ केयर के लिए। I have another company in the US by the name of Toy Cycle, जो कि एक मार्केट प्लेस है फॉर यूज्ड टॉयज एंड बेबी केयर। और इसके अलावा प्रीवियसली मैं एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी भी चलाता रहा हूँ, तो आई हैव सम एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हो सकता है कि आपके कुछ काम आए। Definitely, sir. Thank you. Then we'll move on to Mr. Muhammad Ahmed. Can you hear me? Yeah. Thank you, Ji. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ahmed. I'm the founder and CEO of Syntex, the company that brought location-based services in Pakistan, still holding 100% market share of network location business in Pakistan, and through of course all cellular carriers here. And apart from that, we are into platforms and services that we sell to end customers in collaboration with cellular operators. In addition to a few other ventures, including fintech by the name of Kuwait, and one with one agent network that is operating a network of more than 1,000 franchise post offices across Pakistan under the name of DFP, or Digital Franchise Post Offices. So that's about it. Thank you. Thank you, sir. Kamran Saab. All right. जी अस्सलाम वालेकुम, आप शायद मुझे जानते होंगे। All right, thank you. So apart from this journey with you guys, because this topic is close to my heart, this is what I've been doing since 2011-12. I've been working as a product manager. I first worked in a telco,
for 5 to 6 years. We have launched multiple products. यहाँ पे हमारे नौजवान बैठे हैं जो हमारी प्रोडक्ट बेचते थे और हम बनाते थे और उसमें फिर बड़े मसले आते थे ऊपर कि हमारे पीछे पड़ते थे कि ये काम नहीं कर रहा. So we'll be discussing all those challenges with you, and then later on, made a transition back in 2016, end of 2016, from corporate to startup ecosystem, and since then I've been working with multiple startups in, also had my own startups, plus also been working with multiple startups in a mentor role. So hopefully आज का session थोड़ा interesting होगा and आपको मजा आएगा. Thank you, sir. So moving on, we'll structure the session in such a way where we'll have each of the mentors present first, and they'll give us a very detailed session on product development. And then after that, we'll have our startups up here for a hot seat pitching session, for which I'll explain the rules and scoring system during that time. So without further ado, Mr. Khurram Agha, if we can start with you. See, I'll just share my screen. Just give me a sec. Okay. Fantastic. I hope it's visible. Yes, it is. Okay. All right. So product development, if you want to encapsulate it in 15-20 minutes, there's a lot of books, there's a lot of theories, there's a lot of practical applications that you can come across. So today I'm not going to talk about all of the aspects of the cycles that go into product development. I'll start talking about why product development fails, and what are the pitfalls that you should be aware of, you should be keeping an eye on to keep your focus. So this is not something that I've said, but if you read the quotation, many innovations fail because they introduce products or the solutions without a real need for them. There's no market for the solutions they've created. So this is the epitome of starting product development, that you need to bring out a product which solves a problem for a real set of customers. And it's like a piece of puzzle that fits in and has been missing before. Now, there's several ways to go about it. You can pick up products which already exist in the market but are lacking something. It could be a brand new product that or a service that you're coming up with. But at the end of the day, you do require a need for them. There needs to be a market. There needs to be a product market fit. There needs to be a set of customers who actually need what you're putting up to them. So if there's so many tried and tested methodologies out there, there's the 8 steps, there's the 7 steps, and then there's new product development. Why don't they produce positive results? What happens? So what I'm going to focus on in the next 5 or 6 slides is, what do you do, which is within your circle of influence? What do you integrate into your organization as a DNA and a culture to make sure that you can see early indications and you can see what is required to change, innovate, pivot, or what is required to scale up and move forward. So one of the first things that you need to focus on is a proper product market fit. If you don't have a product market fit, no matter how technically sound your service or your product is, or how impressive it is, if it's not solving a real life problem, you will not get early adopters, you will not get the mass following behind it, you won't get organic growth, you'll end up burning a lot of cash around advertising and getting people to stick through your product or work with it. So do your market research, understand who is your ideal customer, how do you personify them, and how is your product actually solving the problem. Then the second thing I've seen when I'm also coaching and I'm talking to startups is focus on the problem solving. Don't worry about the bells and whistles. They can always follow. Don't get caught up in feature or technologies for the sake of it.
look at how your product can simplistically solve a real life problem. Validate your assumptions. So what I've seen is a lot of people start jumping into product development. My preferred method is put something on a piece of paper, put it into a workflow, put a storyboard, and validate it with your customers just as a simple testing to see if it's actually something that they're looking for. If it's not, what do you need to iterate, change, and talk to your customers again? Then start getting into your developments and then start looking at putting out your MVPs and testing your ground as well. But throughout this entire process, remember product development is iterative. So you might not get it right at the first shot. The market is also constantly changing. Be ready to pivot your product or your strategy as it's required. And it's better to draw out early failures and kill your darlings if it's not working, rather than keep beating at it again and again and making, cost and resource commitments into it when it's not working. So test your hypothesis. If it doesn't work, look at how do you need to pivot, look at what do you need to change, or move to the next idea. The bottom line is customers should love your product because it solves their problems in a way that existing solutions don't. Otherwise, you're just another foray out there. You're just another product which 10 other people are giving today as well. Another pitfall that you need to be wary about is make sure that you do your market research. That includes looking at your competitors, looking at what the problem is, actually spending on-ground time to see what is the opportunity and how to merge or incorporate it into your solutions. While you're doing all of this, don't forget to benchmark your performance. Do set up key metrics for yourself. Do set some goals. What are the early adopters that you need to target out? Are they coming in time? Is your product moving in the right direction? So set some metrics and goals for yourselves so you can identify and track your progress. But at the same time, if it's something that's competing with something already existing in the market, bench yourself against your competitors as well. Monitor what's going on as technical advancements in the market. Look at the consumer preferences. How are they changing? So the biggest example and an overbeaten example on this is COVID-19 changed a lot of methodologies and a lot of ways how people used to look at how do you work. Be focused that you need to adapt and innovate. You need to use insights. You need to use the service offerings in the market, what's in the market, what are the strategies other people are employing, what's working for them, what's not. Gather all of this information and use it to your advantage. Then one focus that you always need to keep is seizing the opportunity at the right time. Market does have a tendency to follow what other people are doing, adapt and bring out the solution. There might be players who are much bigger than you, especially in the digital arena, who would have deep pockets to spend around marketing. So how do you seize the opportunity at the right time? Because again, it comes back to if you over-engineer something and you've lost the market opportunity, it's lost. So the bottom line is keep conducting your market research, keep talking to your customers, have focus groups, look at industry reports, gather data both on competitors and the market. So what this means for your organization is develop a culture which is for learning and adaptation. Encourage your teams to stay informed and be open to change as soon as they see the new insights. I think the biggest issue that I've seen in startups that don't work out
is the lack of understanding your customer. So do understand your target market and do understand who is your target customer within that target market. Are you chasing the right customers? Are you marketing to the right customers? Otherwise, if you don't have this focus and if you don't look at the segmentation properly and don't look at who you're focusing at, you might be spraying and praying out there. That means that you're going out, spending a lot of revenue around, expenses around marketing, which is just causing a bleed at your bottom line. Make sure your value proposition is not misaligned. If it doesn't resonate with your target customer, it leads to a low conversion rate. It leads to poor customer satisfaction and negative feedback. And in today's socially adapted marketplace, feedback spreads very, very quickly. Make sure you're not making any marketing misfires. So conduct out anything that you're marketing with your product out there, that you're putting out there, it is actually hitting the right people and the right conversions are taking place. If it's not reaching the right people, it's going to lead to ineffective and expensive campaigns. Keep a very close watch on your CAC. Keep looking at your customer acquisition costs. You don't want to end up with customers who are not contributing to your bottom line and there's a high cost of acquisition around them. So basically, ensure your product or service offers real values to target customers and solve their problems effectively. That's the bottom line. One of the last issues that you need to be very careful on and be very cognitive on, making sure that you have fresh data. Make sure that you're not making decisions based on outdated data that can reflect and that can add to poor decision making. So as an example, during the COVID period, you would now start looking at the market trends and the data around people who would want to work in a contactless manner. Data from 2 years ago or a year ago would lead you to wrong decisions. Make sure that your data is up to date compared to your competitors as well. With incorrect data, you will end up with ineffective marketing and the wrong targeting, and you will end up with financial losses. Data freshness is also a very, very critical element around all the services and products that you put out. So as a culture for your organization, start looking at making decisions based with empirical data. Do not just blindly take decisions sitting in a room determining how the product would work in the market. Test it out, gather data from that, focus groups, talk to your customers, talk to your early adopters, and start gathering all of that data as well to make your decisions. Encourage your teams to value and utilize fresh data, especially for making decisions, no matter which department that you're working in. So, in a conclusion or a recap, basically what have I said? I've said 5 important things. Go beyond superficial needs. Take to understand the underlying inconveniences and anxieties which your customers face, which your services and products should be resolving. Observe the customer behavior. Take the feedback, do focus groups with them, do MVPs, do A/B testing, whatever is required to actively listen to that feedback and understand how your customers are looking at your product or your service. Get their perspectives, get their insights, look at what are the clear benefits coming out of it, which makes it into a value proposition. What do you need to pivot to add that value proposition? How would your product save them time, save them money,
save their resources, improve their quality of life or quality of how they're working today. But at the base of everything, look at prioritizing simplicity, ease of use. Complex solutions with a steep learning curve will automatically start facing adoption barriers in the market. And this is true for even great products. So prioritize simplicity. Look at, how is my product or service going to be given to the customer? And they don't need to go back and look at a self-help guide or a FAQ. The product should be easy enough for them to use on their own. So given the time and the complexity around product development, I hope this brings some perspective to you guys on some of the pitfalls that you're looking at, which might be coming up, and how to navigate around them. So that's it from my side. I hope this helps you out. Thank you, Khurram Saab. So we'll be moving on next to Mr. Mohammed Ahmed. Thank you very much. Like I introduced myself, I represent a company, Syntex, that brought in location-based services here in Pakistan. And Khurram Saab has very concisely summed up the entire process of product development and the venture around it in a very comprehensive manner. I would like to just focus based on my experience of working on a few platforms that have served on the consumer side, millions of consumers, and on the corporate side, thousands of corporate customers. So in that experience, I would try to emphasize the importance of user-centric design. Of course, every product has a given target market, target audience that most of you might have, sitting here in NIC, most of you might have already worked out what your product is going to be, what your customer segment is going to be, what problem is it going to solve. But focusing on user-centric design is the key for a product. Again, like Khurram Saab mentioned very concisely, that understanding the user persona of your product is very important. And for that, of course, the design, the flows, the different elements of the features, they all play a part in it. And the product has to be self-sufficient in navigating the user throughout the entire process. Of course, it's very important to understand or focus on the problem that you're solving, but how you're solving is very important. I'll give you a quick example of a simple door. If there's a handle, look at the intuition of your users, how they perceive a simple design element as simple as a door. If they go and see a door with no handle on it, they'll intuitively push it to open rather than trying to pull or get their hands around something. So that's a self-navigating design of a simple element like a door, that you make the users to just push it to open. That's it. So if there's a handle on a door like the one over there, and there's nothing written on it, either pull or push, so then you're depending on the user on how they perceive it. So that's one part of it. In my experience of coming up with the first product, the platform that we brought in here was location-based services. Back then, there were no smartphones. They were not as mainstream as they are today. Most of the people had feature phones, and they had, the population had no idea or perspective of what location can actually do for them. So we, understanding the power of location, working on GPS and location technologies for quite long, we believe that there's a gap in the market that we can actually fill. So it was a very simple concept that
getting the location concept into everyday life. So the first thing we did was we brought in our platform with the cellular operators, and we equipped them to actually access their subscribers' location. Then we started building applications around location. And the first thing was a simple SMS text to a short code. Of course, like I mentioned back in the day, the smartphones were not as mainstream. So a simple text to a short code returned the user their location. It was extreme. I mean, they didn't have to do anything or any query or a command or anything like that. Just a simple blank message to a short code returned them their location. Then expanding on that, we tried seeking ways where we can actually make use of this location for the masses. So we built a family application where people could actually subscribe the whole family into the application, and they could locate their family members through the portal and the SMS and all. And the most successful one was for corporate customers. It was workforce management in its most primitive form, where all they needed to do was just register their employees into a portal where they could have consent of each individual employee to share their location. And that platform has to date served more than 6,000 corporate customers. Of course, going forward, we understood the limitations that the network location carried. We also understood the overall smartphone penetration and their affordability and the power they brought on table. So we understood that the network location platform had a life that we had to accept, and we had to evolve as a product or as a platform. So once the smartphones became mainstream, we tried and expanded our scope, and we brought in mobile applications for the same or similar services, and it grew with time. So all along, it has been very important to understand the user persona on how they perceive or what challenge are they facing that your product or platform is going to solve for them. Another example I would like to give you, it's a recent startup that me and a co-founder have started. It's a fintech platform called Kuwait. So it's a third-party agent network. There are about 4 or 5 different third-party agent networks around. They've been operating. They're doing well. But we brought in a unique proposition for the digital financial services agents. So that was the core problem that we thought we could solve, and we are solving that. Every other agent network today belongs to one single financial institution, and they offer their services over the counter on their agent network. What we brought on the table was to offer a cross-platform interoperable agent network service. And we just launched it in May. We started a pilot in May. And today we are already operating with more than 2,000 agents nationwide. In that platform, our core customer is the agent, not the walk-in customer that he's serving, because he's being served by every other service that he carries. I mean, if you visit any digital financial service agent today, they've got phones for Easy Pesa, one for Jazz Cash, one for HBL Connect and whatnot. But our app has the unique proposition of offering all the services for all the financial institutions through one app. So that's a problem that we solved for the digital financial services agents. Instead of maintaining 3-4 different balances in their different accounts, all they need to do is just top up one single balance, and it takes care of their entire customer base, whoever walks into their outlet. So that's another
aspect, or what I want to emphasize, that understanding your customer, again, I would reiterate that understanding your customer also means to clearly identify who exactly your customer is. On the face of it, this platform is serving every other walk-in customer who visits the agent location. But for us at Kuwait, that customer is not our customer. He's the customer of my customer who is an agent of my network. So I need to solve his problems. I need to make his life easier so that he uses my platform to serve his customers and help with his operations. So that's another point I wanted to make here. So key takeaway is to clearly understand the customer segment, the customer personas, and then user-centric design around your product, whatever it is. It might be a set of services that you productize and sell. It might be a app, it might be a physical, gadget or something. But the core here is that you need to clearly understand or focus on the problem, one problem that you're solving, and everything around, all the peripheral features, functions, and the conveniences that your product offers, design around those. So that's my 2 cents. I think I'm well within time. Thank you very much. Thank you, sir. Mr. Sarfaraz. Thank you. Thank you so much. अहमद साहब ने, खुरम साहब ने तकरीबन चीज़ें सारी कवर कर दी हैं, मेरे लिए कुछ बोलने को छोड़ा नहीं. But since I come from a development background, so I am a technology guy, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़ा सा ओके थोड़ा सा उस साइड से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, and I'll try to make it a little interactive if possible. एक स्लाइड डेक मैंने बनाया हुआ है and we're trying to get that up. जैसे ही अच्छा चले. वैसे मुझे स्लाइड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चलो ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़. सो मैं इसको for last 39 years थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, मेरा ख्याल है टाइम यूटिलाइज करते हैं, खड़े होने का कोई पता चले. So actually I wanted to start off with defining what a product. ठीक है, अब सबको पता है प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब हम प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या है. प्रोडक्ट बेसिकली ना किसी भी एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है. ठीक है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो है कि एक प्रॉब्लम का एक आप डेली कई प्रोडक्ट यूज करते हैं. टेक प्रोडक्ट में फाउंडर स्पीकर दैट एडवोकेट टेक प्रोडक्ट में और एक आम प्रोडक्ट में क्या फर्क है, तुलना बात. तो अगर मैं कहूँ कोई कंपनी लैपटॉप बनाती है तो इज दैट अ टेक प्रोडक्ट? Good. How would you say? Technology तो कंप्यूटर की, टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर यूज हो रही है, ये चीज चल रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी है. एनीवन जो बोलना चाहे खुद से कुछ भी बोले, कोई मसला नहीं, यहाँ पे तो दर्शक ही रहती है. Process good. Anyone? जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप डिस्ट्रीब्यूशन में टेक्नोलॉजी.
Software good. We're almost there. आप लोगों के सारों के ideas बहुत से. And so traditionally जो business होता था ना, brick and mortar business होते थे दुनिया के अंदर, और Walmart, Costco, Dell, Apple, for that matter. इन प्रोडक्ट्स का या जो ये कंपनी के प्रोडक्ट होते थे उनका इनहेरेंट मसला एक ये होता था कि जब आप स्केल करने के लिए जाते थे ना, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक कंट्री में आप हैं या एक सिटी में हैं आप, उससे आप दूसरी सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी. जब ये टेक्नोलॉजी आई, Amazon आया और द व्हाट्सएप्स एंड द फेसबुक्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक खास चीज दिखाई कि हमें किसी नई जगह पे जाने के लिए, किसी नई जगह के ऊपर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. आप सोचें व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ऑल ऑफ अ सडन इट्स ओनली इन द यूएस राइट नाउ. इट डिसाइड्स कि मैंने स्केल करना है इसको, इंग्लैंड के अंदर मैंने अब सर्विसेज लॉन्च करनी है, तो 2-3 सर्वर और लगा देंगे और नाउ यू कैन एक्वायर कस्टमर्स फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल. और इसी तरह से जो एक इन्वेस्टर देखता है एक टेक प्रोडक्ट के अंदर, वो जो खास चीज है वो ये है कि ये एक्सपोनेंशियली स्केल करेगा. ये स्केल करेगा, लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट है टेक प्रोडक्ट का वो ये है कि आपको अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को प्रूव करना है. आपको ये प्रूव करना है कि मेरे कस्टमर को ये चाहिए. तो इस स्लाइड में सिर्फ 3 चीजों को हम लेके चलते हैं अपने साथ. एक ये कि एक प्रोडक्ट जब बनाने जा रहा हूं तो मैंने याद रखना है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसका एक सोल्यूशन है, और मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको स्केल करते हुए मुझे कोई खास दिक्कत, कोई खास कॉस्ट मेरी ना इन्वॉल्व हो. प्रोडक्ट बनाते हुए आपका गोल क्या है? प्रोडक्ट बनाते हुए जो चीज आपने सबसे ऊपर लिख लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल, दैट इज लॉन्च क्विकली. सो माइकल सीबल का किस किस को पता? हु नोज माइकल सीबल? ट्विच का किस किस को पता? ट्विच का फाउंडर था वो, आजकल वाई कॉम्बिनेटर के साथ है. वो बंदा ये कहता है कि जो आपके प्रोडक्ट का इनिशियल बायर होगा ना, वो शख्स होगा जिसके सर के ऊपर आग लगी हुई होगी और उसको आग बुझाने के लिए कोई चीज चाहिए. तो आपके पास अगर एक ईंट है तो वो ईंट भी उठा के डालेगा, उसको बुझाने की कोशिश करेगा. तो बात की है कि अगर आपने प्रॉब्लम सही से आइडेंटिफाई कर ली है और वो किसी की प्रॉब्लम है, तो अब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कैसी भी चीज देंगे वो इनिशियली उसको यूज जरूर करेगा, चाहे उसको बाद में उठा के फेंक दे, लेकिन उसको यूज जरूर करेगा. ठीक है. तो अगर आप लॉन्च नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करते रहेंगे उसके साथ, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो जो भी बातें आपके साथ कर रहा है वो एक्चुअली ट्रू ना हो. और बहुत से प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो वो मार्केट में आए किसी और फॉर्मेट के अंदर थे, आज चल किसी और फॉर्मेट में रहे हैं. आज व्हाट्सएप की एग्जांपल ज्यादा हो गई हैं, लेकिन चलें, कोई बता सकता है बंदा व्हाट्सएप इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तो वो क्या था? जी प्लीज. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, स्पॉट ऑन. तो इट वाज अ स्टेटस. आप सिंपल अपना स्टेटस सेट करते थे कि जी मैं इस टाइम ये कर रहा. ठीक है जी. बाद में जब उनके फाउंडर्स ने रियलाइज किया, अपने कस्टमर्स को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा यार लोग इस मेरी ऐप के जरिए मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और स्टेटसेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, जैसे वो कोई पैगाम पहुंचा रहे हैं, उधर से जवाब आ रहा है, फिर पैगाम पहुंचा रहे हैं, फिर जवाब आ रहा है. तो वी शुड बिल्ड अ चैट. ठीक है जी. सो प्रॉब्लम वाज देयर. उन्होंने एक चीज सामने रखी कस्टमर के, वो नहीं चली, और या वो चली भी तो उन्होंने आइडेंटिफाई एक और अपॉर्चुनिटी की और उसके ऊपर फोकस कर लिया. इसी तरह से जब हम टॉक हेल्थ बनाने जा रहे थे,
टॉक हेल्थ नाम से ही जाहिर है कोई हेल्थ के बारे में बातें शातें की का कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हमने आइडिया ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जहां पे आप डॉक्टर्स को सर्च कर लें और उनसे देख सकेंगे इसकी रेटिंग कैसी है और उससे अपॉइंटमेंट ले लें। ये आइडिया था। ठीक है जी, नाम भी इससे अब इतना मिलता जुलता नहीं है, लेकिन नाम हमने कैसे मिलाया उसके साथ मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। तो अब ये ओला डॉक और मरहम सारे कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2015 जब मैं आप लोगों की जगह पे बैठा हुआ था। तो 2015 में इस आइडिया के साथ हम लोग फाउंडर इंस्टीट्यूट के अंदर आए। लेकिन वही बात, जब हम प्रोडक्ट बनाने बैठे तो हमें ये भूल गया कि हम तो सिंपल ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे। और हमने उसके अंदर एक फेसबुक लाइक टाइम फीड बनाई जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी हेल्थ के बारे में कर सकते हैं। देयर फॉर द नेम टॉक हेल्थ। ठीक है जी, तो ये चीज हमारी गलती थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गलती ना कीजिएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब हम वो प्लेटफॉर्म बना के लोगों के पास गए भी, कस्टमर्स के पास, डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स तो बड़ी खुशी खुशी साइन अप हो जाते थे कि अच्छा यार को मार्केटिंग करने के लिए आया है, ठीक है इसको मैंने अपनी अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है मैं दे देता हूँ। लेकिन बैक इन 2015 कोई बंदा डॉक्टर्स को ऑनलाइन सर्च नहीं कर रहा एंड इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। वी वर लकी, टेक्निकल बैकग्राउंड था, चीजें बनानी आसान थी हमारे लिए। हमने बहुत जल्दी इस चीज को रियलाइज भी कर लिया और हम इस पोजीशन में भी थे कि हम पिवट कर जाते। हर कोई नहीं होता। हमने क्या किया कि जब हम डॉक्टर से मिलते थे उन्हें कहते थे कि साइन अप करो, बहुत से लोग साइन अप हो जाते थे, बहुत से लोग हमें मेडिकल रेप्स की तरह ट्रीट करते थे, बाहर बिठाते थे। लेकिन कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हुई तो उन्होंने हमें कहा कि यार अच्छा यार ये तो पता नहीं चलेगा तुम्हारा कि नहीं चलेगा, लेकिन मैं ना वो डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ। ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं मैं चाहता हूँ मैं खुद ही, जो मेरे फोन पे अपॉइंटमेंट आती है ना उस पर भी एसएमएस चला जाया करे कस्टमर को। और मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरी बिलिंग है ना ये थोड़ी सीधी हो जाए। मेरा वो जो अटेंडेंट है ना, मुझे कभी कभी उस पर एतबार नहीं होता कि वो पैसे पूरे मुझे देता है कि नहीं देता। और फिर ऐसे करते करते हमारा एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम बन गया और हमने एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मनी सेल करना शुरू कर दिया। और क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम जब चला तो उसके साथ ही हमें कुछ हॉस्पिटल्स ने भी रीच आउट करना शुरू किया कि जी आपका क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा है, क्या पॉसिबल है आपके लिए आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना दें। और हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इवेंचुअली एक ईआरपीस थे हमारे पास क्लिनिक और हॉस्पिटल्स के लिए, एंड उसी को लेके हम चलते रहे एंड वी गॉट एक्वायर्ड अ लिटिल टाइम बैक। ठीक है जी, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्चिंग क्विकली। द ओनली गोल दैट यू हैव राइट नाउ इज कि आपने जल्दी लॉन्च करना है और एक प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन, कोई उसके साथ बेल्स एंड वेसल्स की जरूरत नहीं है। जिस बंदे की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रोडक्ट को यूज कर लेगा। ठीक है जी, अच्छा जी। सो नेक्स्ट चीज की तरफ आते हैं। किस किस को पता है एमवीपी क्या होता है? अब आप फाउंडर इंस्टीट्यूट के हैं तो सबको ही पता चले। वेरी गुड। राइट द ब्रॉड फीचर्स। ये राइट को मैंने जो बोल्ड किया है वैसे ही नहीं किया। ये बहुत से लोग नहीं करते, हम लोग भी नहीं करते थे। ठीक है जी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप फीचर्स बनाने जा रहे हैं अपने एमवीपी पे, एमवीपी के उन्हें लिख लें। और जब आप उनको लिखें तो उनके साथ गोल जरूर लिखें कि यार ये मैं क्यों बना रहा हूँ। कई दफा सिर्फ कुछ फीचर अच्छे लग रहे होते हैं, यार ये जरा अच्छी लगेगी आप हमारी इसके साथ, इसलिए बना लेते हैं। तो वो काम नहीं करना, आपने साथ में गोल्स अपने लिखने हैं। नेक्स्ट चीज, कट देम डाउन वंस अगेन। दोबारा उसमें से जो भी रिडंडेंसी है उसको निकालें, जो भी चीज रिमूव हो सकती है उसको निकालें और जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। आई कम फ्रॉम अ डेवलपिंग बैकग्राउंड जी, तो मुझे पता है कि डेवलपर को किस तरह की स्पेसिफिकेशन समझ आती है। ठीक है, वो इस तरह की स्पेसिफिकेशन को समझता है। आप लिखते रहें सफ़े के सफ़े, कोई नहीं पढ़ेगा, डेवलपर नहीं पढ़ेगा आपके आपकी स्पेसिफिकेशंस को। ना पढ़ना चाहता है, मुसीबत में पढ़ लेगा, लेकिन उसमें से आधी चीजें वो समझेगा, आधी चीजें नहीं समझेगा। इसको कहते हैं जी वायर फ्रेम्स। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स आउट देयर जो कि आपको वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग की इजाजत देते हैं। ये कुछ मैंने टूल्स आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। इनमें से बहुत सौ के साथ आप लोग ऑलरेडी वेल अवेयर होंगे। अगर किसी को नहीं है, आप गूगल भी करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। वायर फ्रेमिंग और मॉकअप के टूल्स कौन से हैं आपको बड़ी इजीली। ठीक है जी, तो मेरी सजेशन ये है कि जब आप
फीचर्स को एक दफा ब्रॉडली लिख ले, लिखने के बाद जब आप स्पेसिफिकेशंस किसी डेवलपर को देने के लिए जाएं, बुद्धू किस्म के लोग होते हैं, उनको नहीं ज्यादा, उनको जो बताओगे वो कर देगा, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर आप बाद में ये कहेंगे कि यार ये तो अंडरस्टूड था, तो वो कहेगा सर ये अंडरस्टूड आपको होगा, मुझे नहीं। और ये एक बहुत नॉर्मल लड़ाई है डेवलपर्स की और प्रोडक्ट मैनेजर्स की और बिजनेस ओनर्स की। बिन थ्रू दैट अ मिलियन टाइम्स। सर तो इस फॉर्मेट के अंदर कुछ अच्छे टूल्स हैं, बिल्सैमिक भी आपको अलाउ करता है, आप इसको स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दें, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन कर जाएगा और वो पूरी पूरी ऐप का एक्सपीरियंस आपको वायर फ्रेमिंग के अंदर देता है। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, जिसने वर्ड एक्सेल यूज किया है, पावर पॉइंट यूज किया हुआ है, वो इसको यूज करते हुए बड़े ही जबरदस्त किस्म के एक दिन के अंदर बनाना शुरू कर देता है वायर। सो दिस इज नो रॉकेट साइंस। अच्छा जी, सो दिस इज अनदर थिंग विच इज वेरी इजी टू फॉल बिटवीन द क्रैक्स, एंड दैट इज कि जब आप स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं किसी भी चीज की, तो उसमें ये लिखें कि आप इस चीज को मैयर कैसे करेंगे कि यार ये मेरी चीज चल भी रही है कि नहीं चल रही। आपको कैसे पता चलेगा ये जो चीज मैंने बनाई है ये एक्चुअली, क्योंकि बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाई है आपने, कोई ऐप बनाई है, वो यूजर के पास है, यूजर के ऐप के अंदर है, मोबाइल फोन के अंदर है, वो उसको वहां पे यूज कर रहा है। कोई बटन चल रहा है नहीं चल रहा, कोई नेविगेशन लिंक चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप लोगों को कोई पता नहीं। ठीक है, तो ये आपको बिफोर हैंड जब आप स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं उस वक्त डिसाइड करना है, या जब आप वो वायर फ्रेम्स बना रहे हैं, कि यार मैं ये क्यों डाल रहा हूं और मैं इसको मेजर कैसे करूंगा कि वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट, राइट। इसके लिए बहुत सी टीम्स जो है वो केपीआईज बनाती हैं, केपीआईज बनाना चाहें बना लें, नहीं बनाना चाहते अपफ्रंट ना बनाएं, बेशक टाइम जाया ना करें, लेकिन इतना जरूर कर लें कि आपको इसकी परफॉर्मेंस का पता चलता रहे। गूगल एनालिटिक्स करें, हॉटजार करें, स्मार्ट लुक करें। कुछ केसेस के अंदर अगर आप एंटरप्राइज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो यू माइट हैव द चांस टू एक्चुअली सी द पीपल यूजिंग इट, तो उनसे मैनुअल खुद फीडबैक लें। अगर आपका B2C प्रोडक्ट है, उसमें आपको ये लिबर्टी हासिल नहीं होगी, उसमें आपको एनालिटिक्स के ऊपर ही रिलाय करना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स अगर किसी ने नहीं यूज किया हुआ, तो उसके लिए एक थोड़ी सी स्नैपशॉट है, आपको बता देता है कि आपके कौन कौन से यूजर्स हैं, कितने सेशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक बटन्स के ऊपर इवेंट्स ट्रिगर किए हुए हैं आप लोगों ने, तो वो इवेंट्स के बारे में बता देता है, कहाँ पे कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो उसके बारे में बता देता है। दिस इज समथिंग दैट आई लव अबाउट गूगल एनालिटिक्स, एंड दैट इज कि वो आपको हर पे जो आपकी पूरी जर्नी है ना कस्टमर की, वो बता देता है। यूजर यहाँ पे आया था, ऑर्गेनिक सर्च से आया था, 50% यहीं से लीक आउट कर गया है, तो आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दिस, आई नीड टू इम्प्रूव ओवर हियर। ठीक है, और इसी तरह आपकी पूरी की पूरी ऐप के अंदर या आपकी पूरी पूरी वेब के अंदर कहीं पे भी कोई इशू होगा, वो उसको हाईलाइट कर देगा और आप उसको आसानी से एड्रेस कर सकेंगे, या एटलीस्ट हाईलाइट कर देगा, फिर एड्रेस करना आपका अपना काम। वंस अगेन गूगल एनालिटिक्स गिव्स यू एक्सीलेंट कन्वर्जन के ऊपर नंबर्स आपको देता है, आपकी कार्ट के अंदर से कितने % बिलिंग पे आ रहे हैं, बिलिंग से एक्चुअली प्रोसीड टू चेकआउट और प्रोसीड टू पेमेंट कितने करते हैं। एन एक्सीलेंट टूल, हाईली सजेस्टेड कि हर कोई रखे। फिर कुछ लोग काम करते हैं अपने पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो उनके लिए हॉटजार है, आपको पूरे पेज में से व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग उसके हीट मैप्स दे देता है, एंड यू कैन ऑप्टिमाइज योर पेजेस विद दिस। हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप ये चीज़ें यूज़ करें। अच्छा जी, सो आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस बना ली। अभी तक हमने क्या किया था, हमने प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसकी स्पेसिफिकेशन इस तरह से बना ली ताकि एक डेवलपर उसको समझ आए और उसको यूज़ कर। और हमने साथ में ये भी मेजर्स रख लिए कि यार मैं अपनी जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, मैं कैसे चेक करूंगा कि इट इज वर्किंग और नॉट, व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट, व्हाट डजंट। अब हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं इसको बनाने के। तो एज फाउंडर्स, ऑल ऑफ यू माइट नॉट बी फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो जो मेजर चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं कि यार मैं कौन से टेक स्टैक के ऊपर अपना प्रोडक्ट बनाऊं, मैं डेवलपर रिसोर्सेज कैसे ढूंढूंगा, और इन डेवलपर के रिसोर्सेज को मैं मैनेज कैसे करूंगा। सो जो टेक्नोलॉजी स्टैक की का जो चॉइस है ना, वो अगर आपके पास टेक्निकल को फाउंडर है तो वो ऑलरेडी हुआ हुआ होगा। देयर विल बी अ स्टैक जिसके ऊपर वो कंफर्टेबल होगा, उसको आता होगा वो यूज करना, तो वो, बट स्टिल चाहे आप एक टेक्निकल को फाउंडर है चाहे आप नॉन टेक्निकल को फाउंडर है, कुछ चीजें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उनके ऊपर
नज़र ज़रूर मार लें। एक तो लो कोड टेक्नोलॉजीज को ज़रूर देख लें, ठीक है जी। और टेक्नोलॉजी स्टैक वो वाला चूज करें जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा तो एक तो डेवलपर उसका आपको आसानी से मिल जाएगा। नंबर टू, उसके बने बनाए कंपोनेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो दीज आर द टू मेन थिंग्स। अगर आप नॉन टेक्निकल को फाउंडर हैं तो आजकल नो कोड टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा, जिनमें कोडिंग किए बगैर आप पूरी पूरी ऐप बना लेते हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर देखें। जनरेटिव एआई के बाद चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, उनको इंटेलिजेंटली यूज़ करें, आंखें बंद करके यूज़ ना करें। फाइंडिंग डेवलपमेंट रिसोर्सेज, सो अब दिस आल्सो कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, वर्क विद द एक्सपर्ट्स ओनली, ठीक है जी। बहुत आसान लगता है ये कि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ काम करें और कम पैसे दे के प्रोडक्टिविटी को अचीव करने की कोशिश करें, जो कि नहीं होता, ठीक है जी। आई हैव गॉट अबाउट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स माई सेल्फ। उससे पहले भी मैं करता रहा। वर्क विद एक्सपर्ट, जो एक काम एक एक्सपर्ट 1 घंटे में करेगा, वो एक न्यूबी उसी काम को 1 हफ्ते में करेगा और आपका सर भी बहुत खाएगा। तो इट्स बेटर टू पे एन एक्सपर्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड इट्स वर्थ इट। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके आपके प्री बिल्ड आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, बने बनाए आपके पास सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो वो ले लें। खुद से ना बनाने बैठें। खुद से बनाना, यू डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील, ठीक है। इवन इफ यू, ये सबसे ज्यादा मसला टेक्नोलॉजी वाले बंदों का होता है, मेरे जैसे बंदों का होता है कि यार नहीं बनाना है भाई, खुद ही बनाना है। भाई क्यों बनाना है? एक चीज बनी हुई है, उसको यूज कर लो, ठीक है। तुम्हारे जो महीनों की एफर्ट है वो खत्म हो जाएगी, हमने ठोकरें खा के सीखा है। सो दिस इज हाईली एडवाइजेबल। अगर बने बनाई चीजें हैं तो उनके साथ काम। अगर आप डिसाइड करते हैं जी कि मुझे तो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी ऑन बोर्ड लेनी है, तो उसमें एडवाइस ये है कि देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट स्पेशलाइज इन सर्टेन डोमेन्स, ठीक है जी। जिन्होंने ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें पहले की बनाई हुई होती हैं और बहुत से चैलेंजेस को पहले से एड्रेस किया होता है। किसी नई सर्विसेज कंपनी को ऑन बोर्ड ले लेंगे तो इन प्रॉब्लम्स के अंदर फंसेंगे। उनकी तरफ ना जाएं। किसी ऐसे बंदे के साथ काम करें जिसने पहले से काम किया हुआ हो, सिमिलर डोमेन के अंदर काम किया हो, सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर काम किया हो। आपकी जिंदगी आसान रहे। अगर आपको कोई डेवलपर इक्विटी के ऊपर मिल जाए तो मैं हाल है दुनिया में इससे बराबर की चीज कोई नहीं, ठीक है। तो आप ले लें उसको ऑन बोर्ड, लेकिन डेवलपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसकी। अगर ऐसा डेवलपर आपको मिल जाए, आई थिंक दैट्स द बेस्ट बैट दैट यू हैव। आउटसोर्सिंग इज गुड एंड बैड। Good in the sense that it allows you to focus on the business, and if you can find a good team who has the expertise to deliver that product, आपके लिए आपकी जिंदगी काफी ज्यादा वो लोग आसान कर देते हैं। However, outsource ही होता है जी। There's another person who's running the show, who's profiting out of giving you the services. So it's always better to have an in-house team जिसको आप grow कर सकें, और जब आप scale कर रहे होते हैं तो वो in-house team आपकी हमेशा आपको help करें। एग्रीमेंट्स, एनडीएज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू बी वेरी वेल थॉट आउट, चाहे आप किसी डेवलपर को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि कोई बंदा आपके प्रोडक्ट को किसी भी टाइम पे हाईजैक कर ले। तो दीज थिंग्स नीड टू बी वेरी वेल थॉट आउट। ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी के आने की वजह से तो और भी चीज़ें आसान हो गई हैं। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, लेकिन इसको सिर्फ हाईलाइट इस वजह से किया। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्रोडक्ट को खराब कर सकती है, आपके स्टार्टअप को खराब कर सकती है। तो इस पर जरूर तवज्जो दें जी, प्लीज। यार आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू, राइट। फिर इससे ज्यादा क्या करोगे? इससे ज्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना। तो ये भी अपने जहन में रखने की जरूरत है। यू नीड टू प्ले इट स्मार्ट। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में इतने अरसे से रह रहे हो, समझते हो एनवायरनमेंट को, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। एटलीस्ट आप कल को उसको थोड़ा तंग कर सकते हो। ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी ना। हाँ बिल्कुल करता, बिल्कुल करता। अच्छा, मैनेजिंग डेवलपर रिसोर्सेज। सो ये एक ऐसी चीज है जो कि एक प्रॉब्लम है। एक नॉन टेक्निकल बंदा और एक टेक्निकल बंदे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेक्निकल बंदा हमेशा 1+1 को 2 ही कहता है, जबकि बिजनेस वाले लोग हमेशा ग्रे एरियाज के अंदर खेलने के आदी होते हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर रेफ्ट रहती है। लेकिन बस इसमें ये एडवाइस दूंगा कि स्पेसिफिकेशंस आपकी, जब आप किसी डेवलपर से बात करें, आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी।
हैव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम कि ही इज आल्सो क्रिस्टल क्लियर विद दैट। वो आपको एक एस्टिमेट देगा, लेकिन आपके ज़हन में ये पहले से होना चाहिए कि जो एस्टिमेट देगा इस पे पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है, कोई ही शायद ऐसा डेवलपर हो जो अपने एस्टिमेट से पूरा उतरता हो। एक्सपर्ट्स के साथ जब आप काम करेंगे, व्हेन यू वर्क विद वेरी गुड पीपल एंड यू आर पेइंग देम दैट मच एज वेल, तो उनसे शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टाइमलाइंस मीट होंगी। नहीं तो अपने जेन में रखें, फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। या जब आपको पहले ही पता होगा अच्छा ठीक है ये 2 हफ्ते कह रहा है, लगने 3 ही हफ्ते हैं, कोई बात नहीं, 3 में भी कर दे तो शुक्र करें, फिर अगर 3 से ऊपर जाए तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपकी बनती है। ठीक है, डेली स्टैंड अप्स करें। डेली स्टैंड अप्स का आइडिया है आप लोगों को? डेली स्टैंड अप ये होता है कि यार आप अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं 5 मिनट के लिए और उनसे पिछले दिन की प्रोग्रेस पूछते हैं। कोई चीज जो आपको कोई हर्डल होता है उनके रास्ते के अंदर, आप वो उनसे डिस्कस करते हैं कि यार क्या है प्रॉब्लम, ताकि वो चीज टाइमली फिक्स हो जाए। वो आपको 1 हफ्ते के बाद ना ये बताए कि यार ये तो इस वजह से नहीं हुई, तो आप कहोगे यार आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बजाय इससे कि फिर उस वक्त रेफ्ट हो किसी भी किस्म की, बेहतर ये होता है कि आप डेली स्टैंड अप्स करें। डेली के डेली आप उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दें, वो भी ऑन देयर टोज रहेंगे, आप लोगों को भी चीजें क्लियर होंगी। वीकली प्रोग्रेस मीटिंग्स करें, जिसके अंदर आप प्रोग्रेस को एनालाइज करें। इसके ऊपर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा KPIs रखें, and this should be somehow associated with their compensation as well. If they are meeting their deadlines, if they're making good progress, pay them well. If they're not, penalize them to some extent. You need to figure that out. कुछ टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए जो कि आपको अपने रिसोर्सेज को या प्रोडक्ट को मैनेज करने के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो हमने सफर गुजारा उसके अंदर आपने स्पेक्स फाइनलाइज कर लिए, आपने बिल्ड भी कर लिया, एनालिसिस का प्लेटफॉर्म भी आपके पास था जो कि आपने एनालाइज किया जिसकी बेसिस के ऊपर कि मेरा प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है। वो चाहे मैनुअल फीडबैक थी, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स थे, चाहे वो जिस तरह से भी हमने 4-5 तरीके अभी तक डिस्कस किए। फीडबैक आई आपके पास, आपने एनालाइज किया, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस व्हाट यू डू इज आइटरेट। ठीक है जी, आपने क्विक लॉन्च किया था, आपने कोई बेल्स एंड विसल्स नहीं डाली थी उसके अंदर। आपका मकसद वंस अगेन यही था कि आप वो जो एक प्रॉब्लम आपने उठाई थी उसका सोल्यूशन तक पहुंचे। तो जो आपको अपने सोल्यूशन के अंदर कमियां नजर आए उसको दोबारा आइटरेशन के अंदर लेके आए, उसकी दोबारा से स्पेक्स बनाए, स्पेक्स बना के दोबारा बिल्ड करें और फिर दोबारा एनालाइज करें। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये इसी तरह से चलता रहे। ठीक है जी, इसीलिए कहते हैं जल्दी लॉन्च कर लें ताकि आप इस प्रोसेस के अंदर जल्दी से आ जाएं। और जो ज्यादा जल्दी क्विकली आइटरेट कर लेते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लास्टली मैं आपको ये कहूंगा, AI, जनरेटिव AI को यूज करें एज मच एज पॉसिबल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको स्पेसिफिकेशंस बनाने में भी हेल्प करेगी, आपको गोल्स KPIs सेट करने में भी हेल्प करेगी। जो चीज आप लोग नहीं सोच पा रहे आपको बताएगी, आप तक वो जल्दी से पहुंचा दे। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ 3 डाली हुई है यहाँ पे। अगर आप गूगल करेंगे ना किसी भी प्रॉब्लम के लिए आजकल जनरेटिव AI, इवन प्रेजेंटेशन बनानी है ना आपको, आप उसे एक प्रॉम्प्ट दे दो, मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दो, और वो पूरी पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। ठीक है, तो इसने जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी है, थिंकिंग प्लानिंग बहुत आसान कर दी है। आप उन रिसोर्सेज को यूज करें, आपका प्रोडक्ट अच्छे से इंशाल्लाह डेवलप होगा। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Sarfaraz. Thank you, sir. Sir Kamran, you're up. So are there any questions from the startups at this point from any of the mentors? Assalamu alaikum. I'm Saqib, founder and CEO of Bazaar Online. It's an e-commerce startup. My question is from Sarfaraz. Aapki presentation se, obviously you are an advocate of a fast product. Okay, it is a launch करें, but there is another school of thought जिसके अंदर कहते हैं कि बेस जैसे एक बिल्डिंग की बेस या फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज बिल्ड हो सकें। तो एक ई कॉमर्स
का भी बता दें और जनरली भी बता दें कि किन सिचुएशंस में वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दैट कि अच्छा फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट फास्टली। ई कॉमर्स की बात करते हैं। देखिए मैं अभी प्राइमरीली जिस चीज पे फोकस कर रहा हूँ दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोशिश करेंगे। अब आप ई कॉमर्स का अगर आपका प्रोडक्ट है तो बजाय इसके कि आप ई कॉमर्स की पूरी पूरी वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन खुद से बनाना शुरू करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो टू शॉपिफाई। मतलब लेट्स से अगर शॉपिफाई और वो वर्डप्रेस वगैरह उससे वो नहीं हो सकता, इट्स समथिंग डिफरेंट, तो उस केस में लेट्स से उस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू नीड टू प्ले इट स्मार्ट। ठीक है, अब आप नहीं बता रहे, बताना चाहें तो बता दें एग्जैक्टली कि क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन शॉपिफाई में भी प्लगइन्स बन जाते हैं आपके जो वर्डप्रेस है उस पर भी प्लगइन्स बन जाते हैं। आप हाँ ओडू भी है और देयर लॉट्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म जो कि आपको कस्टमाइजेशन अलाउ करते हैं। तो बजाय इसके कि ग्राउंड आप बनाएं जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, देखें जो भी आप प्रोडक्ट इन्विजन कर रहे हो, ठीक है, उसमें से अगर आप समझते हो कि यार इवन 50% ऑफ द चीज जो है मैंने वो पुरानी शॉपिफाई वाली यूज करनी है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार वो 50% दोबारा से ना बनाओ। ठीक है, जाहिर है आपको इनोवेशन लेके आ रहे हो, कोई इनोवेटिव आइडिया होगा ऑफ कोर्स। और अगर आप समझते हो कि नहीं जो मेरा आइडिया है ई कॉमर्स का वो बिल्कुल ही सेपरेट है उससे, वो इट हैज नथिंग टू डू विद प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर्स, तो फिर ठीक है, मतलब आप वो करें। ऐसा नहीं है कि वो लोग सक्सेस अचीव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो सक्सेस के चांसेस है ना वो ज्यादा है। जिंदगी के अंदर एक चीज याद रखें कि जिंदगी में कोई परफेक्ट रूल फॉर एवरीथिंग नहीं होता। हर फाउंडर की अपनी एक जर्नी होती है। और लेकिन जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, यार कुछ चीजें मैं नहीं बता सका अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, देर आर आई कैन आई कैन गिव यू 10 to 20 एग्जांपल्स फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। ही वाज इन माय कोहर्ट एक्चुअली, तो मैं इस वजह से उसको, जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाते बनाते ही शेल्फ हो गए, उनका प्रोडक्ट कभी मार्केट में ही नहीं आया। क्यों? वही एक पैशन के जी आई नीड टू गेट थिंग्स राइट। मैं नाम अभी किसी का भी नहीं लेना चाहता, मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी की सेविंग प्रोडक्ट बनाते बनाते गुजार दी एंड इवेंचुअली शेल्फ करके अब कुछ और। ठीक है, ठीक है। अच्छा गाइस, सो व्हाट वी गोना डू इज कि हम इस बस प्रेजेंटेशन के बाद वी ऑल विल बी हियर, आई होप फोरम साहब इज विद अस एज वेल, तो उसके बाद हम इंटरेक्टिव कर देंगे इसको, ठीक है, सो दैट यू गाइस कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और हर एक की डिफरेंट जर्नी है, हर एक का डिफरेंट स्टाइल है ऑफ प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, सो आई नो यू गाइस, आई थिंक बेटर देन दीज टू, लाइक आप सबकी जर्नी मुझे पता है, इस वक्त आपके स्टेज पर हो, कौन कौन से चैलेंजेस हैं आपको, हर एक के डिफरेंट, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स। कुछ हार्डवेयर में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किसी के फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और हर एक के डिफरेंट चैलेंजेस, हर एक डिफरेंट स्टेज पर है। सो हम इफ़ यू वांट टू हैव अ सेपरेट सेशन उसके बाद वन ऑन वन करना है, तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट। लेकिन फॉर नाउ अभी हो ये रहा था, लास्ट लाइक वीकेंड पे आई वाज वर्किंग ऑन यू गाइस, आप ही के पिच टेक्स्ट पे मैं काम कर रहा था, बिकॉज वी हैव टू डेवलप स्टार्टअप डिक्शनरी फॉर यू गाइस। सो मैंने सोचा था कि यार वीकेंड पे होगा तो आई एम गोना वर्क ऑन दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट वोंट टेक मच टाइम। लेकिन हुआ ये कि मुझे टाइम नहीं मिला प्रेजेंटेशन बनाने में। लेकिन वन आई वाज सिटिंग हियर, अभी सुन रहा था, तो मैंने कहा साथ साथ ज़रा बनाते हैं, अगर बन गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनी तो बाय चांस बन गई तो
अभी रन टाइम पे, so we gonna be discussing the golden nuggets of product development. So what are the best practices? और ये best practices के लिए I would recommend, if you guys are into reading books or listening to audiobooks, so Lean Startup by Eric Ries, very good book. अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें. तो वहाँ से क्या golden nuggets मिले हमें? So we're gonna talk about that. अच्छा. So the first is the goal of a startup is to figure out the right thing to build, the thing customer want, and will pay for as quickly as possible, as already mentioned by Sarfaraz. कि आपने मार्केट में as soon as possible आपने जाना है, irrespective of perfect product के चक्कर में आप opportunity मिस ना करें. अच्छा, this is what we did back, because if you remember, हम so I was working in Zong as a product manager, और हम multiple products में थे. So आपको पता है कॉर्पोरेट में इनोवेशन के लिए जो है ना वो बहुत रूम नहीं रहता, बिकॉज यू नो उनके लिए एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के लिए innovation is very challenging, क्योंकि उस however in our case we were lucky because our CEO was so visionary. उसने कहा कि it was kind of a company within a company, so we had a department called, and later on it was corporate sales, but we had developed a new department called enterprise solutions. और उसमें हमें ये रूम मिला कि आप खेलें, आप देखें कि you know what's going on. हम चाइना गए, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे क्या इनोवेशन हो रही है. बैक इन 2012 की बात हो रही है. एंड फ्रॉम देन वी, वहाँ से हमें पता चला कि यार दुनिया कितनी चेंज है और वहाँ पे किस किस्म के सोल्यूशन. देन वी केम बैक एंड देन वी स्टार्ट, ओके सो वी गोना गो टू मार्केट, वी गोना लॉन्च एज many products as possible, एंड देन वी गोना लर्न लेटर ऑन कि मार्केट क्या कह रही है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. अब सो हमारा जो पहला वर्जन था इट वाज वेरी क्रैप, इट वाज हैड लॉट ऑफ इश्यूज विद UI UX के हमारे, लेकिन हमारे जो बेसिक जो उसने काम कर रहा था एटलीस्ट वो कर रहा था. सो अगेन, सो द कमिंग टू द पॉइंट कि आपने पहले यू हैव टू फिगर आउट एग्जैक्टली आप बिल्ड क्या करने जा रहे हो और क्या कस्टमर उसके पैसे देगा कि नहीं, कस्टमर है कौन सा और उसके पैसे देगा कि नहीं. और यू हैव टू बिल्ड इट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड देन लेट द कस्टमर डिसाइड कि उसको क्या चीज़ उसमें से चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट दैट समथिंग कि आपने एक बना लिया और उसके बाद आप बैठ गए. सो दैट्स द फर्स्ट गोल्डन नगेट ऑलरेडी मेंशन्ड बाय सरफराज. ऑलरेडी आपने बिल्ड, measure, learn, feedback. So it's a feedback loop. ठीक है, so you build first, उसके बाद आप उसको measure करते हो and then you learn from it, from the based on the feedback of the, and then you build again. Yeah, and इसको आपने quickly and cheaply as possible आपने इसको करना है. So again, don't have to spend too much dollars on it. ठीक है, make it as simple as possible, and the market will tell you what they need. और उसके साथ ही आपके जो version 2, version 3, so आपके versions निकले, जो versions निकलेंगे, and that will basically determine eventually the product will gets matured, it will be different from. So I'm sure most of you guys इस टाइम आप इस टाइम जिस स्टेज पे हो, आज से 5 साल बाद if you are able to sustain the market, आपकी उसकी शक्ल different होगी. And trust me, ask these guys, इनका जो पहला version था it was different than when the product gets matured, so it had lot of new features which were basically derived from the customers. अच्छा, so अब बात करते हैं कि यार strategy क्या है. So what you have to define a strategy for your business, आपकी product के लिए, and उसमें आपका एक vision है. So you all have a vision. आपके vision mission का session था, उसमें बात हुई यार what is your, आपका long term vision है क्या, why are you doing it, what is the reason you are in this startup world. आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे, यू नो, यू ऑल आर क्वालिफाइड, आप जॉब कर सकते हो, अच्छी जगह पे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप यू नो यू आर दोस क्रेजी वंस हु सेड कि नो वी गोना डू स्टार्टअप. सो यू मस्ट हैव विजन, और उस विजन के गिर्द गिर्द आपकी एक स्ट्रैटेजी बनती है विच इंक्लूड्स आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका स्टार्टअप का रोड मैप क्या है, तो प्रोडक्ट का आपका रोड मैप क्या है, एंड देन व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग. आपका कंपटीशन होगा इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, एंड उसके बाद आपके एजम्पशंस कि आप कस्टमर होगा कौन, ठीक है. सो उसके अगेंस्ट आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते. ओके, सो स्टार्टअप होता क्या है? इट्स अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन डिजाइंड टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी. सो राइट नाउ अगर हम एग्जांपल, लेट्स टेक अ लाइव एग्जांपल, वी हैव ट्रूली पाकिस्तान. ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो इस टाइम जो
होटल्स, हमारे जो रेस्टोरेंट्स, हमारे जो पीपल वर्किंग इन द इकोसिस्टम ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, चाहे वो पिक एंड ड्रॉप वाले हैं या जो दे वांट टू डिजिटाइज। ये एक उनकी एग्जम्पशन है एंड इट्स अनसर्टेनिटी है, ठीक है। क्या वो तैयार भी है कि नहीं? EV Square wants to convert all the gasoline cars into electric cars. Assumption है क्या लोग तैयार हैं? Or maybe they are not. Maybe they are. So we were, startup founders work in extreme uncertainty. There's a big challenges. But sorry, being born in Pakistan itself is a very, so it's an uncertain situation. So we are used to it, ना? इसलिए हम ढीठ हो जाते हैं. तो हमें so again, if you are successful in business as an entrepreneur in Pakistan, you can be, आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हो. Bro, it is from the ये हमारे जो again it is from learning from the lean startup. So lean startup methodology ये कहती है. So it's not just, yeah, absolutely, it's not just Pakistan. पूरी दुनिया में आप जब डिस्ट्रप्शन कर रहे हो, डिस्ट्रप्टिंग अ मार्केट, आप यू आर प्लेइंग वेरी अनसर्टन. आप कोई अगर आपको मैं कहूँ कि यार आप जाके खोखा खोल लें, ठीक है, और वहाँ पे चाय सिगरेट और पान बेचें, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी व्हाटसोएवर. तो सो ठीक है. अच्छा, नाउ इनोवेशन. सो व्हाट इनोवेशन इज? इनोवेशन जो है ना, इट्स अ बॉटम्स अप अप्रोच, ठीक है, और इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल थिंग, बट डजंट मीन इट कैन नॉट बी मैनेज. यू कैन मैनेज इनोवेशन, लेकिन अगेन बात अनसर्टेनिटी में आप कर रहे हो काम, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो. सो यू हैव टू बिल्ड दोस प्रोसेसेस अराउंड इट. आप उस जब फीडबैक लूप में करो ना कि बिल्ड, मेजर एंड लर्न, वहां से आप एक प्रोसेस के थ्रू जब आप अपनी प्रोडक्ट पे काम करोगे तो इवेंचुअली यू विल हैव अ लेस चांसेस ऑफ फेलियर. ओके, कस्टमर्स डू नॉट टेल अस व्हाट दे वांट. कस्टमर नहीं बताता उसको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन वो अपने एक्शन से जरूर बताता है कि यार मुझे क्या नाम है, या इन एक्शन. सो आइदर ही विल टेक एक्शन और ही वोंट टेक एनी एक्शन. आपने एक फीचर बनाया SMS ऐप के, यार मुझे एक मैंने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया फॉर यूनिवर्सिटीज एंड दे आर गोना, अब दे माइट यूज इट, दे माइट नॉट. एडमिशन प्रोसेस उनको चाहिए, ठीक है, SMS ऐप से वो कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्शन लें, यस, वो कहें कि यार उनको बहुत प्रोडक्टिव लगी ये चीज़, और दे माइट इग्नोर इट. लेकिन पता कैसे चलेगा? जब कस्टमर उसको यूज करेगा. उससे पहले इट वाज ऑल अजम्पशन. सो कस्टमर बातों से आपको कह देगा हाँ जी बिल्कुल जी आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है जी, इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है यहाँ पे, जी बिल्कुल मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मुझे उसको जन्नत मिर्जा की से मार्केटिंग करवानी है मैंने, ठीक है, ठीक है. लेकिन बाद में उसको कहिए नहीं यार सॉरी पैसे नहीं थे मेरे पास, सॉरी आई डोंट, आई थिंक आई शुड, डायरेक्टली मैं उसको अप्रोच कर दूं, ठीक है. सो के एक्शंस विल टॉक, सो नॉट जस्ट द वर्ड्स. सो कस्टमर जो है वो अपनी एक्शन या इन एक्शन से आपको बताता है कि उसको चाहिए क्या. अच्छा, कैन यू वैलिडेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन यू वैलिडेट योर हाइपोथेसिस विदाउट बिल्डिंग एनीथिंग? आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है यार, आप पहले अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, ठीक है. तो कैसे होगा? आप रन एन एक्सपेरिमेंट एंड मेजर कस्टमर बिहेवियर, ठीक है. कैसे होगा वो? एग्जाम्पल देते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई वांट टू आस्क यू गाइस, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपने अपने रिस्पेक्टिव स्टार्टअप्स के लिए अगर आपने कोई हाइपोथेसिस, आपके यू वांट टू नो यार मैंने क्या, तो व्हाट, हाउ कैन यू, आप कैसे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो? एनीवन? ठीक है. अच्छा, ठीक है. आप कह रहे हो कि उनसे आप बात करते हो और उनसे आप कहते हो, उनके फिर फीडबैक मिलता है एंड देन यू स्टार्ट, आप ये कह रहे हो? ठीक है. अच्छा, ओके, अली से.
अच्छा ठीक है, एनीबडी एल्स वांट टू ऐड ताकि बिफोर आंसर दैट? जी 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 रेहान, या ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है अच्छा ठीक हो गया। अच्छा देखिए मैं इसमें, चले ओके, मुझे आप सबसे फीडबैक थोड़ा आ गया, जस्ट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इफ आई वर यू, अच्छा वर्चुअल यू कैन आल्सो आस्क, यू कैन आल्सो आस्क एनी क्वेश्चंस, वो फिर बाद में विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन देखें, आपने एक बेसिक कस्टमर से आपने एक्सपेरिमेंटेशन करना है, आप वर्बली उससे, वर्बली वो बहुत कुछ कहेगा लेकिन डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। अगर आपका एक बेसिक साइन अप पेज है ना, जस्ट बिल्ड अ बेसिक साइन अप पेज और उस पर लिख लें कि यार वी आर बिल्डिंग दिस थिंग, साइन अप इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर वो साइन अप करता है, वो उसके एक्शन की है, सो इट मेक्स कुछ सेंस कि यस, शायद ये जो है मेरा कस्टमर प्रोस्पेक्ट बन सकता है। वो जबानी कलामी कुछ भी है, लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट पे जाके इतनी तकलीफ कर ले कि वो अपना ईमेल एड्रेस दे दे और एक आपकी वेटिंग लिस्ट में आ जाए, यू आर बिल्डिंग समथिंग अमेजिंग। सेपवा बना रहे हैं जी हम, सो वी गोना वर्क ऑन यू नो इमोशनल प्रॉब्लम। सो आई नो दिस गाइस, so you know there's a startup called Brazilian Systems. They are building a it's an AI based tool. It's an which basically tells कि यार जो employees के जो burn out होता है, उनके mental health के क्या issues हैं, and then there's those findings are sent to HR anonymously कि यार इस time आपके organization में क्या हिसाब किताब चल रहा है। Now this is, आपने एक sign up page भी बना लिया, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि वी आर बिल्डिंग दिस थिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वेटिंग लिस्ट पे आ जाए। अगर उन्हें साइन अप कर लिया तो उनके एक्शन स्पीक्स कि यस दे माइट बी इंटरेस्टेड। आप वर्बली उनके पास गए, दे माइट गिव यू प्रॉमिस, मेक मोर लॉट ऑफ प्रॉमिसेस, लेकिन बाद में जब प्रोडक्ट आपकी आएगी एंड दे माइट से या ठीक है देखेंगे कर लेंगे, विल टॉक टू। सो आप उसको वैलिडेट जरूर करें। अच्छा अच्छा, तो another thing is क्या ये करें कि don't follow the just do it line of thinking. For example, launch and see what happens. You will not gain validated learning this way. If you cannot fail, you cannot learn. Failure is important. Failure is very important, and that's where you learn from it. ठीक है, लेकिन again, it all depends on how you take that failure. आप उसको कैसे वो लेते हैं। Can you validate your hypothesis without building? अच्छा हम इस पे already बात कर चुके हैं, या मुझे पिछला आ गया, अच्छा सॉरी। हाँ, do not find the average customer but find early adopters. So आपने कस्टमर, आपने पहले देखना अर्ली अडॉप्टर्स कौन है आपके प्रोडक्ट के। सबसे पहले ईवी स्क्वायर की गाड़ी सबसे पहले कौन, किस, हु आर दोज पीपल हु इज गोना अडॉप्ट टू कन्वर्ट देयर गैसोलीन व्हीकल इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो आपके। तो आपको पहले जो है अपने मार्केट में जाने से पहले आपने अर्ली अडॉप्टर्स को देखना है कि यार हु आर दोज गाइस, जो कि जिनको उस प्रोडक्ट की नीड भी समझ आ रही है और वो उसको सबसे पहले वो एम्ब्रेस करते हैं, बिकॉज दीज आर वो आपके एम्बेसडर्स हैं। अगर आपने उनको अच्छा सर्व कर लिया, वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो अर्ली अडॉप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आपके एजम्पशंस होते हैं हर प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो करते हैं, यू एज्यूम थिंग्स, आपके एक एजम्पशंस होते हैं। सो आप उसको टेस्ट करो, फर्स्ट विद MVP। अच्छा MVP पे अब बात करते हैं। सो व्हाट टाइप्स आर, 3 टाइप्स, ठीक है, एज पर एरिक रीस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ MVP। एक होता है वीडियो MVP। आप जैसे सॉरी या आपने एक वीडियो बनाई, बहुत सिंपल वीडियो बनाई, आपने एक्सप्लेन किया यार हम ये बनाने जा रहे हैं, आप साइन अप करो। ऐसा आई मैंशन कि आप, मैंने लैंडिंग पेज की एग्जांपल दी, आप वीडियो बना लो, ठीक है। ट्रेल रश, ठीक है, आप एक वीडियो बनाओ और शेयर इट ऑन योर पेज, से कि यार हम लोग जो हैं, हम लोग इस तरह वी आर वर्किंग ऑन एडवेंचर टूरिज्म एंड वी आर गोना बिल्ड अ प्रोडक्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप साइन अप कर लो। इतना तो कर सकते हो ना, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो। एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स आता है तो इसका मतलब ये यस यू माइट क्रैक द कोड। अच्छा, देन देयर इज कंसीयर्ज MVP।
So do everything yourself to create an awesome personalized experience. ठीक है? अच्छा. So you can, you need to have a growth model. Otherwise, you might become satisfied with a small profitable business when a pivot maybe lead to more significant growth. अच्छा. Pivot आएगा. Again, आपकी जो first product की जो first version है वो आपकी final product है ही नहीं. आपकी product iterate होगी. So आप कंसर्ज एमपी. अच्छा, फिर देन देयर इज अ विज़ार्ड ऑफ ऑज. देयर इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ विज़ार्ड ऑफ ऑज. विज़ार्ड ऑफ ऑज क्या कहता है कि यार सिमुलेट करें. आप कुछ जो बना रहे हैं ना, आप एक सिमुलेशन के फॉर्म में दे रहे हैं कि दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट विल लुक लाइक. ठीक है? एंड टेस्ट करें उसको मार्केट में, व्हाट मार्केट सेज अबाउट इट. फिर उसको बिल्ड करें. पहले बिल्ड करके मार्केट में गए, रिसोर्सेज लगा ले, डेवलपर्स को इतने पैसे दे रहे हो. ठीक है? मार्केट कह रही है नहीं, हमें तो जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही आगे हमें तंग करने. सो पहले उसको अगेन आप टेस्ट करो अपने एमवीपी. सो अच्छा, देन वंस यू हैव एन एमवीपी, फिर आपने उसको ट्रैक करना है. ठीक है? अपनी प्रोडक्ट कि हाउ यू आर गोइंग टू मेजर आप. सो यू नीड टू हैव अ बेसलाइन, क्लियर बेसलाइन मीट्रिक, hypothesis about what will improve that metric and a set of experiments designed to test that hypothesis. ठीक है जी. तो कितना टाइम हो गया? टाइम है? अच्छा, ओके. अच्छा, सो MVP, लो क्वालिटी MVP अगर आप बनाते हो ना, यानी कि बहुत बेसिक, अर्ली अडॉप्टर्स के लिए वो बहुत अच्छा है. ठीक है? वो शुरू में आपके अर्ली कस्टमर्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट है. लेकिन जो मेन स्ट्रीम आपके जो कस्टमर्स हैं, जिन्होंने इवेंचुअली इस प्रोडक्ट को वो करना है, उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट होगी. हमने जब पहला वर्जन लॉन्च किया था अपने प्रोडक्ट का, बैक इन 2012 की बात हो रही है, जो मेरा पहला प्रोडक्ट था, इट वॉज बिजनेस SMS सोल्यूशन. हम सिर्फ उसमें करते हैं कि यार आपने सो इट वॉज कि यार आप अपनी मार्केटिंग अपने अपना एथनिक है या जे डॉट है, तो आप एथनिक और जे डॉट से आप मैसेजेस SMS भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को. दैट वॉज द प्रोडक्ट. बाद में हमने बहुत ही बेसिक UI के साथ उसको लॉन्च किया था. वेरी बैड UI. मतलब उसको अभी मैं देखता हूँ, मैं कह यार ये क्या चीज़ हमने बनाई थी, लेकिन उस टाइम जरूरत थी. वी हैड टू गो इनटू द मार्केट एंड बट लेटर ऑन हमें कस्टमर्स ने बताया कि हमें इसमें ये भी चाहिए, हमें ये भी फरमाइश. तो फिर फरमाइशी प्रोग्राम आता रहा और हम फरमाइशी प्रोग्राम उसको डालते रहे. अच्छा, फरमाइशी प्रोग्राम किसी एक कस्टमर से आए, डोंट गो फॉर इट, डोंट मेक अ मिस्टेक. किसी एक की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे आप अपनी प्रोडक्ट के साथ मत छेड़ो. इफ इट इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल कस्टमर्स, देन यू हैव अ प्रॉब्लम. देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट. और लेकिन उसमें भी आपने देखना है कि यार मैंने अपने नेक्स्ट वर्जन रिलीज निकाले, कौन से क्रिटिकल फीचर्स हैं जो मुझे पहले चाहिए, कौन से क्रिटिकल फीचर्स है जो मुझे. सो अगर मॉस्को मेथड है, हु नोज मॉस्को मेथड? मॉस्को का किसको पता है? सर आपको तो पता होगा. ठीक है? मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव. ठीक है? मॉस्को. सो आपके पास एक मॉस्को मेथड को आप फॉलो करो. क्या मेरे मस्ट हैव फीचर्स कौन से जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, एंड देन शुड हैव और कुड हैव. ठीक है? एंड देन यू नो कि आपने कौन कौन से उसको करना है. ठीक है? तो आई थिंक या दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय एंड. और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं. या थैंक यू. Thank you, Sir Kamran. So after this session, what we'll do is we'll move on to the hot seat pitches. So the system for that is we'll invite startups at random. They're not aware that they're being called up, and they will pitch their startup idea in 60 seconds. So in just a minute. So after that, you have to evaluate them based on a scorecard that you see in front of you. So the scoring system works this way. You can either give them a 1, a 2, a 4, or a 5. So we've eliminated a concept of a 3 because we don't believe in averages, right? So it's either on the lower end or it's on the higher end, as you're probably familiar with the FI scoring session. So we'll begin with our very first startup, who we have with us, Essen from Verity AI. Hello, Assalamu alaikum. My name is Ehsan and अच्छा अच्छा गाइस, आपके सामने ये स्कोरिंग शीट्स भी हैं. ठीक है? सो 60 सेकंड के बाद ऐसे के बाद फिर आपने उसको स्कोर देना है, आपने वो कार्ड डिस्प्ले कर. ठीक हो गया? एंड देन यू कैन गिव योर फीडबैक. ठीक हो गया? इट्स वेरी सिंपल. Mr. Khurram Agha, if you can hear me, you can please WhatsApp your score to me. You have my contact? Yeah, I'll do so. Thank you. थैंक यू.
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और करंटली मैं एज एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ। एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप में करता था और करंटली भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो उस स्टार्टअप में मैंने जैसे मैंने ये सीखा था कि डेटा को किस तरह इंटेलिजेंटली विजुलाइज करते हैं बाय द वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो जब मैंने ये नीड देखी कि ठीक है, करंटली एआई बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लोग जनरल पर्पसेस के लिए एआई पे काम कर रहे हैं, लाइक एलएलएम्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। दे वर्क्स वेरी गुड इन जेनरिक, बट स्पेसिफिकली अगर किसी इंडस्ट्री में हम किसी एआई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इट विल बी हैक्टिक अप्रोच। तो उसके बाद एआई असिस्टेंट्स का दौर आया, जिसके अंदर लोगों ने एआई असिस्टेंट्स पे काम किया। राइट नाउ इस वक्त मार्केट के अंदर बूम है एआई एजेंट्स का, कि आप एजेंटिक ऑटोमेशन लाएं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि एनवीडिया के सीईओ ने भी कहा, जेंसन ने भी, कि लाइक आफ्टर 1 or 2 years, लाइक मे बी एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, बट ऑब्वियसली बिजनेसेस विल इनकॉर्पोरेट द एआई एजेंट सिस्टम्स। तो उसके Ehsan, sorry to interject. Your time is up. एक छोटी सी टिप दे दूं एहसन के नहीं, लिए। पहले आप स्कोर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसको टिप कर सकते हैं। So we'll go towards the scoring. एक्चुअली द रीजन इज कि वो इंट्रोडक्शन में ना ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया। एग्जैक्टली। देखिए, पिच को तो नंबर इस टाइम अच्छे नहीं दिए जा सकते, ये आपको में हालांकि क्लियर है बात, नहीं आपको भी आप और हम सबको। एब्सोल्युटली, चलो आप पहले स्कोर दें, उसके बाद फिर आप अपना फीडबैक देंगे, ठीक है? So we have a 1 from our mentors here, physically present, and I am waiting for Mr. Khurram Agha's score. G1. Oh, it's a 1 from all our mentors. We do welcome feedback after the scores. हाँ जी, सो अभी यू कैन गिव Sure. फीडबैक, अभी आप एक एक करके यू कैन आस्क 1%। So the when you have only 1 minute to pitch, you cut the introduction. No, we're not interested in getting any background, any third party quotations, any references. एक छोटी सी टिप है इसके लिए कि जब आपके पास 1 minute पिच का टाइम है तो आप the maximum you can pack into it is you start with for the problem statement or the customers facing that problem. We offer your product definition that solves this, that solves the problem this way. So you basically pack the whole concept in a few seconds. So if that saves you a little more, a few more seconds, you can probably get into highlight details. But सबसे पहला important काम कि किन लोगों के लिए क्या प्रोडक्ट है, जो करती क्या है। उसके बाद आपसे सवाल जवाब होंगे, आपका बैकग्राउंड पूछेंगे, थर्ड पार्टी वो दूसरों के कोर्स हो, ये सब। थैंक यू। यार, एक तो मैं ये बता दूं कि मैंने भी पहली दफा पिच की थी, सारों ने एक ही दिया। परेशान नहीं होना इस पे, ठीक होता है, जिंदगी है। दूसरा ये कि हाँ, मतलब आपकी पिच प्रिपेयर्ड नहीं थी, या आपको भी पता है, तो एक ही आना था। तैयारी करेंगे, ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कोई टेंशन नहीं। Mr. Khurram, if you have any feedback. जी, मेरा फीडबैक है, दिस इज अ लेसन, फेल अर्ली एंड अडैप्ट फास्ट। सो इट अगर मैं, हर एक का एक अपना स्टाइल होता है, अगर ये मैं पिच दे रहा होता ना, आई वुड हैव पुट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। कि जस्ट एज एन एग्जांपल, कॉल सेंटर्स के ऊपर मैसिव कॉल वॉल्यूम आती है, हाउ कैन cognitive or AI come in and automate solutions? So you need to link the problem with the solution, and you can take it in any order, but you need to connect it with real life. And like everybody said, you don't need to give the introductions of who you are, because you're standing here, we know who you are. So again, I think the lesson learned out of this is fail early and adapt quickly. अच्छा, भाग रहे हो, मैंने एक सेकंड मेरी फीडबैक भी सुन लो भाई, ठीक है? आ जाओ इधर, शाबाश। ठीक है, अच्छा।
अच्छा यार, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मेरे एंड पे भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आपको तकरीबन अब कोई 2.5 महीने से ऊपर हो गए, और हॉट सीट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फाउंडर इंस्टीट्यूट करिकुलम एज वेल, जिसमें आप अभी तक आई थिंक, अगर आपने बाकी सेशंस में आपने सुनी है हॉट सीट्स बाकियों की, अभी तक नहीं सुनी, इसका मतलब यू मिस्ड आउट ऑन सेशंस एज वेल, ठीक है। और आपने असाइनमेंट्स की होंगी, असाइनमेंट्स में हॉट सीट की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हो आप 1 मिनट में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा ही है। तो उसमें पूरा कैटेगोरिकली एफआई में, ठीक है, वो पूरा बताते हैं कि यार आपने 60 सेकंड में कैसे कवर करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बतानी है। यू हैव ओनली 60 सेकंड, सो एज यू मैंशन, आप सब ने बिल्कुल सही कहा। स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, व्हाट इज योर सोल्यूशन, व्हाट स्टेज यू आर इन, वाई, सो आप उसको 60 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, और आई थिंक यू डिडंट नो कि आपने आना है, क्योंकि लेकिन चूंकि आपने की नहीं है तो इसलिए आपको बुलाया गया, क्योंकि बाकी सारे यहाँ बैठे हुए, मोस्ट ऑफ देम हैव डन इट, राइट, दैट्स व्हाई यू बीन कॉल्ड इन। सो आपको वैसे ही प्रिपेयर्ड आना चाहिए था, लेकिन नो प्रॉब्लम, अगेन इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, प्रैक्टिस करो। एनी हेल्प चाहिए, हम इस पर स्पेशल सेशंस करेंगे पिचिंग पे। We want you guys to be ready for 1 minute pitch, 3 minute pitch, 5 minute pitch, 8 minute pitch. ये सारे आपके पास होने चाहिए, ये सारी यार इसके पीछे एक बड़ी साइंस है। एज अ फाउंडर जब भी आप किसी बंदे से मिलते हो ना, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्टिव बिजनेस भी हो सकता है, वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी हो सकता है, तो यू शुड नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस। ये ऐसे ही नहीं, फाउंडर इंस्टीट्यूट ने ये एक क्रिटिकल पार्ट, मतलब आपका बिजनेस कैसा है ये आपकी पिच नहीं डिटरमिन करेगी। आपकी पिच बहुत बुरी हो सकती है और बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एज अ फाउंडर व्हेन यू मूव अराउंड, व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स, अगर आप ये नहीं सही तरह से बता सकते उनको एक एलिवेटर पिच के अंदर, वो जो भी 1 मिनट आपको दे रहा है उसके अंदर, यार मैं क्या कर रहा हूँ, एंड यू कैन नॉट एक्चुअली हुक हिम विद योर पिच, तो आई थिंक नुकसान उठाओगे। तो इस वजह से दिस इज अ, माना बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपने बिजनेस फोकस करना है, मैंने इन चीजों पे फोकस नहीं करना, बट स्टिल आई थिंक ये आपको बहुत फायदा देगी, और इसके ऊपर मेहनत कर लें। आपने मेहनत नहीं की हुई और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। आज Thank you. Uh, so the next founder that I'd like to call has joined us virtually. Mohammed Fahad, can you hear us? Hello, everyone. So switch on your video, and then I'll let you know when to start. Let me know when you're ready. Hello, everyone. ठीक है, yes. Okay, so you have 60 seconds to pitch, and your time starts now. Hello, everyone. You must have been the founder of a company, and आप लोगों ने अपनी company के लिए और startup के लिए hiring और recruitment की होगी, maybe hire a web developer. And despite your best efforts, there must be some mishires. So I am Mohammed Fahad, and I'm the founder of Skillability, and Skillability is an online pre-employment skill assessment platform that helps companies hire the talent efficiently and more faster. और ये प्रॉब्लम बेसिकली हमने कैसे इसको इनकाउंटर किया, वी स्टार्टेड विद द जॉब बोर्ड, और हमने इस प्रोसेस को देखा कि अक्सर जो कंपनीज हैं वो डेवलपर्स को हायर करने में मिस्टेक कर लेती हैं, एंड दे डोंट इवन नो कि सेल्स के लोगों को कैसे हायर करना है, और इंटरव्यू प्रोसेसेस आर समटाइम्स वेरी टीडियस एंड वेरी लॉन्ग, और जो लॉन्ग और रिमोट कल्चर को भी हम लोग आजकल प्रमोट कर रहे हैं, एंड फॉर दैट पर्पज देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म कि आपके इंटरव्यूज और आपके हायरिंग प्रोसेस को वो बेसिकली इफेक्टिवली आप उसको कंडक्ट कर सकें। सो वी हैव अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प आउट करता है। वी हैव एंटी चीट मॉनिटर्स इन प्लेस, वी हैव skill Fahad, assessment sorry, library, and your time is also up. simulate one-way video interviews. Thank you, Fahad. And also we are integrating our platform with the job boards as well, and applicant tracking systems. ठीक है, वो Okay, so we're done. Good job. Yeah. Okay, so for the scoring, I'll ask Mr. Khurram to start.
Okay, while we're waiting, Mr. Khurram has texted me. So if we can have the scores from our judges here. So it's a 4 from Mr. Ahmed, a 4 from Mr. Sarfaraz, and a 2 from Mr. Kamran, as well as a 2 from Mr. Khurram. Good job, Fahad. You got 2 Thank you. votes. So we'll have the feedback session now. Mr. Ahmed. हाँ जी, it was a good pitch. आपने बिल्कुल clearly उसको sum up किया. बाकी थोड़ा सा डिटेल द हाउ पार्ट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था कि वो आपका उसमें यूएसपी क्या है, हाउ यू आर सॉल्विंग दैट. यू फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम, यू मेंशन्ड द सॉल्यूशन वेरी क्लियरली एंड कंसाइजली, बट थोड़ा सा हाउ पार्ट वीक है जिसमें ज़रा क्लैरिटी आए कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल. दैट्स माय फीडबैक. Do I have to answer? Yes, you can. ठीक है. सो बेसिकली हाउ वी आर डूइंग इट, सबसे पहले हमने कोशिश की कि मार्केट में हम लोग कंपनीज के पास गए एंड वी हमें कुछ पुश बैक सा मिला क्योंकि हमारी जो रिक्रूटिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा विजिलेंट और एक्टिव नहीं है. सो व्हाट वी डिड, नाउ वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट आवर सर्विसेज विद द जॉब बोर्ड्स, क्योंकि वहां पर हमारे पास कंपनीज आती हैं और अगर हम उसको ऑटोमेट कर दें, उन जॉब बोर्ड्स को अगर हम पाकिस्तान में उनको अगर हम पावरफुल कर दें, तो आई थिंक वी हैव अ गुड कस्टमर बेस. बाय हाउ पार्ट आई मेंट कि आपका यानी इसमें वो जो है वाओ फैक्टर क्या है कि किस तरह से आप इफेक्टिवली हायरिंग करवा सकते हैं, या उसमें वो जो चैलेंजेस हैं वो एड्रेस कैसे करते हैं. दैट वाज माय क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. सो बेसिकली हमने कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी मदद से हमने कुछ टेस्ट अच्छा बनाए. फहद, एक चीज यहाँ पे ना, हम आपके बिजनेस और उस पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पिचिंग पे बात कर रहे हैं. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि आप अपनी पिच में जो है वो हाउ का फैक्टर आपको ऐड करना चाहिए था या कर सकते थे. वो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. इट्स जस्ट अबाउट योर पिच. जी जी. सो या जी. I think Sarfaraz. Fahad, you did a good job. जैसे अहमद ने कहा, I think I agree. I won't say you nailed the problem and the solution part. I think ज़्यादा बेहतर कर सकते थे आप उसको भी. I definitely see a place of your product in the market. Once again, जो आप ऐसी क्या चीज़ लेके आ रहे हो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये हमें समझ नहीं आई. लेकिन पिछली पिच इतनी बुरी थी और आपको इनकरेज भी हम करना चाहते हैं, तो हमने आपको अच्छे मार्क्स दे दिए हैं. ठीक है. तो लेकिन एक फीडबैक थोड़ा सा ऑनेस्ट ये कि आई थिंक you've identified a good problem, and if you have that solution, I think you should be able to pitch that in a better way. अभी जो आपने पिच किया इसको इम्प्रूव किया जा सकता है काफी ज्यादा. तो प्रॉब्लम तो क्योंकि मैंने खुद फेस की हुई है तो मुझे पता है कि द प्रॉब्लम इज देयर. क्या आपका सोल्यूशन इतना अच्छा है कि इस मार्केट को वो कैप्चर कर पाएगा? आई एम स्टिल डाउटफुल ऑन दैट पार्ट. एंड यू हैव टू, मतलब अगर आप 1 मिनट की प्रैक्टिस करते हो तो पहले 30 सेकेंड्स के अंदर प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड देन हाउ. वो जो है ना कि मैं कैसे, मेरा यूएसपी क्या है, how am I different from all the other players, what is it that I'll be using to address this. तो उसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करेंगे, you'll be able to nail that. By the way, I'm still not able to understand your USP. आपने 2-3 दफा कोशिश की है बताने की after the pitch as well, लेकिन इंशाल्लाह इसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे कभी. थैंक यू फहद. थैंक यू सर, थैंक यू. अच्छा फहद, आपको मैंने 2 क्यों दिए? क्वेश्चन है क्योंकि ऑल्दो मैंने वही वाली बात है, नॉर्मली होता ही है कि जब हम पिचेस, जब हॉट सीट होता है, इवन उससे पहले हमने और भी हॉट सीट के अलावा मेंटर आइडिया रिव्यू था हमारा उसमें. तो जनरली जजेस जब वी एक्सपेक्ट देम टू स्कोर एट द सेम टाइम ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो. नाउ वंस आई हैड माय 2 इन माय, अब मैंने देखा ये दोनों 4 हैं. अब एक सेकंड के लिए मैं सोचा इन्फ्लुएंस, आई वाज अबाउट टू गेट इन्फ्लुएंस, मैं ये 2 रख के मैं 4, मैंने कहा मैं भी 4 कर दूं. बट देन आई हैड मेड अप माय माइंड, देन आई हैड टू गिव 2. एंड व्हाई 2 फहद इज बिकॉज सिंपल, द प्राइमरी रीजन इज क्या हम चाह रहे हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ. देखो बेयर मिनिमम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है. वी वांट यू गाइस टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और आप
अपने यानी कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को खुद एक्सीड करो, एंड दैट इज रीजन आई गिव यू टू क्यों दिया? आपने प्रॉब्लम को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से आपके 30 सेकंड सिर्फ प्रॉब्लम ही एक्सप्लेन करने में लग गए, और फिर आप सोल्यूशन और प्रॉब्लम में ही इतना फंसे रहे कि आप बाकी एलिमेंट्स ऑफ द पिच को आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसमें सबसे बड़ा कि व्हाई, व्हाट इज द यूएसपी, व्हाट आर द salient फीचर्स ऑफ स्केलेबिलिटी टेस्टिंग सर्विस, कि आपके पास why somebody would take use your product as compared to competition. आपने ये भी नहीं कवर किया इस वक्त आपके स्टेज पे हो, यू कुड हैव सेड वी आर लाइव नाउ और वी हैव दीस यूजर कस्टमर्स, आप 5 सेकंड में आप ये बता सकते थे, लेकिन आपने ये भी मिस किया। बिजनेस मॉडल भी बना सकते थे 5-10 सेकंड में। आई थिंक यू कुड हैव कवर्ड ऑल दीज, ये 5 एलिमेंट्स एटलीस्ट आप हॉट सीट में आराम से कवर कर सकते हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, आपका एक फ्लो बन जाएगा, तो naturally you would be able to nail the pitch. ठीक है, all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll work on these points, inshallah, for the next time. Mr. Khurram, do you have any feedback? My feedback would be, I'm sorry, my network is a little unstable if my voice breaks, but my feedback is there's room for improvement. Hence, not a 3 or a 4. The pitch can be more concise and have more impact on it. So problem solving was there, but the impact wasn't there. Right. Thank you, sir. The third startup that I'd like to invite. The third startup that I'd like to invite has also joined us virtually. Zishan Aslam. Zishan, can you hear us? Do we have Bilal Athar with us? Okay. So random placement at this time, since the ones I had selected are not here. Okay, so I'll invite Eamon, CEO and founder of EV Square. Okay. Now, due to environmental issues, skyrocketing fuel prices, and high maintenance costs of traditional vehicles, one can possibly think of switching to an electric vehicle, right? But due to their unaffordability and lack of charging infrastructure, they are inaccessible for majority of population of Pakistan. So what we are doing, we are converting traditional vehicles into electric. Along with that, we're also providing off-grid solar charging solutions for organizations that are managing fleets for their transportation needs. We are focusing on four-wheelers, including 650cc, 1000cc, and 800cc vehicles. Right now, we are going B2B. We have already served Ministry of Science and Technology, Ministry of Defense. We have rolled out our first MVP2 back in 2022. It's been on road from last 2.5 years, driven about 31,000 kilometers. We have achieved the maximum speed above 100 kilometers per hour, range exceeding 200 kilometers per charge. We have reduced the operational cost from 17 rupees in case of our gasoline cars to 5 rupees per kilometers. With a dynamic team of engineers, our aim is to make electric vehicles affordable and accessible for every individual of Pakistan. Thank you. Thank you, Eamon. Right at 60 seconds. So we'll start with the scores in a minute. Let me just ask Mr. Khurram to share his scores with me on text. Okay, so we'll see the rest of the scores now. So a 5 from Mr. Ahmed, a 5 from Mr. Sarfaraz, a 5 from Mr. Kamran, and a 4 from Mr. Khurram Agha. We'll take feedback remarks. Sure. Excellent pitch. Very concisely explained. सही लगा, सब समझ आ गया.
कि क्या करें, practically no questions really. जबरदस्ती बहुत अच्छी पिच थी। आई थिंक थोड़े से नंबर्स डालें। यूर ऑलरेडी इन द मार्केट, थोड़ा सा मार्केट साइज के बारे में बताएं, कितनी बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाह रही हैं, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर आपकी पिच सुन रहा है ना, वो he'll always be interested in finding कि क्या अपॉर्चुनिटी है। आप सेल्स कर चुकी हैं तो आपके क्या नंबर्स हैं उस साइड के, पर इफ दे आर गुड तो फिर तो लाजमी प्रेजेंट करें। अगर इफ दे आर नॉट दैट इम्प्रेसिव सो फार तो ठीक है, आप उसको बेशक हाइड कर लें। And if you can actually just वैसे तो it's a difficult problem that you're solving, तो थोड़ा बहुत तो सुनने से ही समझ आ जाती है कुछ सीक्रेट सॉस है, everyone cannot do that। लेकिन एक लास्ट चीज जो कि अगर आप कर दें तो दैट वुड बी चेरी ऑन द टॉपिंग, तो वो ये कि आपने थोड़ा सा कंपेटिटर से किस तरह से आप डिफरेंट हैं, किस तरह बैरियर टू एंट्री है इसके अंदर, और क्या चीज़ आपको नॉट इजी टू बीट करती है। ये दो चीज़ें अगर आप ऐड कर लें, नंबर वन नंबर्स, और नंबर टू अपना जो मोट है आपका, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्रिसाइजली ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो इस वक्त यानी कंपनीज लेके आ रही हैं ब्रांडेड डिफरेंट चाइनीज और दूसरे, वो खरीदने में वर्सेस कन्वर्जन में कितना बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है टू समबडी हु, और कोई सेफ्टी का भी एस्पेक्ट ज़रूर देखिए। I got 2, 2, and 1. So it was just because I did numbers, but it was just that I spoke too fastly and they said you are like overselling your product. So, but now I'm glad that I like nailed it. But I'd say जो Chinese market में है product, I think they're not from Pakistan, and they are our product is 1/3 of the price of the electric vehicle that's on market. But we are also working on the features to integrate as much as features that we can, so that it will be comparable to the OEMs that are in the markets. For example, we have been working on regenerative braking. We have included cruise control, infotainment system, proper user interface, application, जिस पे सारा display हर चीज़ monitor हो रही होगी, thermal management system, battery management system. We are working on this project, and still I would say जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में अभी मिल रही हैं from 3.8 to 4 million की रेंज मिनिमम, हम लोग 1 million में यही सब कुछ ऑफर कर रहे हैं, and that's I think our USP, and we are still working on following the standards like the OEM standards that जिन पे वो vehicles already बनाई गई थी. So yeah, that's it. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू rather than the pitching, लेकिन अगर आप पिच में भी उसको ऐड कर सको तो रेगुलेटरी कोई इश्यूज हैं इसके अंदर, कोई आपको लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह जो कि आपको मे भी करनी पड़ती हों इसके अंदर? हमने इस सिलसिले में एक्साइज एंड टैक्सेशन से बात की थी, क्योंकि दे आर रिस्पांसिबल फॉर द व्हीकल रजिस्ट्रेशन। एज पर एज देयर कंसर्न, तो उनके लिए तो ये मसला नहीं है, बट फॉर अस दे सेड कि आप ईडीबी से सर्टिफिकेशंस ले लें, बिकॉज इन फ्यूचर मे बी सुजुकी को कभी कोई इशू आ जाए कि यू कैन नॉट डू दिस विद आवर व्हीकल्स, या फिर कुछ सेफ्टी इशूज। तो हम अभी एक प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, वी आर नाउ कन्वर्टिंग अ बीटल। सो द कॉन्सेप्ट इज कि we can update the technology while retaining the charm of the classic. So we are working on this model. Uske baad inshallah will hit towards EDB, and uski certification ka process start hoga. So after that inshallah koi masla nahi hai. All right, thank you guys. अच्छा, Eamon, very good pitch again. Last time said this time there improvement नजर आ रही है, और वो क्यों आई है? Because you've been practicing and practicing and practicing, you know. So I'm really glad for that. Was really happy to giving you 5. Yes, Room of improvement is still there. I mean, इसका मतलब 5 doesn't mean that you have ticked all the boxes. ठीक है? वो आपने काफ़ी आपने एरिया सारे कवर कर दिए थे, आई बिलीव, मुझे उसमें कुछ नहीं। लेकिन अगेन ऐसा सेट के शायद एक दो चीज़ें थी, शायद वो आप उसमें ऐड कर सकती थी, लेकिन विल टेक देम ऑफलाइन। ओवरऑल अ वेरी गुड जॉब, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। Okay, sir, thank you. Mr. Khurram, if you have any feedback remarks. Gee, one suggestion I would give is if first of all, excellent pitch. The room for improvement is if you could emphasize more on the impact. Especially अगर आप B2B कर रहे हैं, so as an organization, were they saving like 50% of their fuel cost, or
is it assumed that they can save 50% of their fuel cost or 20% of their fuel cost? थोड़ा सा अगर आपको एक impactful add कर लें कि what does this translate into? So for a company of, let's say, 100 vehicles, this can translate into a saving of 50%. So that would drive it even further. So actually, we have calculated this for companies, but I think I couldn't add it in 1 minute pitch. But in case मैं अगर 3 minute की pitch कर रही हूँ या 5 minute की, तो obviously this is the thing that मैं mention करती हूँ. देखिए, where I'm coming from is when you're going B2B, if you're going and solving a problem, what is their problem? Their problem is the expenses that they need to take against fuel. Otherwise, तो गाड़ी चल रही है. So is it that you are solving their money problems? Are you giving them a saving? If that is so, because if I owned a company with a fleet of 100 cars, my problem as an owner would be कि जी मेरे फ्यूल पे पैसे कितने लग रहे हैं और मुझे उस पर एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही. हर महीने वो चार्ज कुछ और हो रहा है. या अगर मैं किसी कंपनी में हूँ और मैंने एम्प्लॉयज को फ्यूल कार्ड दिए हुए, it's not a stable expense for me. It's very difficult to forecast as well. So does your solution bring in that stability, and can it help in their budgeting? I think that's the major problem that companies would be facing right now. And that's the eventual crux of the solution that you're giving out. Otherwise, तो वो इंजन वाली गाड़ी तो पिछले 20 साल से भी चल रही थी, रेंटल कार सर्विस पिछले 20 साल से भी चल रही थी. जी सर, बिल्कुल सही है. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. So next we'll have Mr. Saqib from Bazaar Online to present his 60-second pitch. Hi, I'm Saqib Khan, founder and CEO of Bazaar Online. Bazaar Online is a unique, custom-built buyer, manager, vendor e-commerce marketplace, which is different from traditional buyer-seller e-commerce marketplace. In our model, our trained managers manage the digital presence of our vendors. All we need from our vendors is their inventory, as a result of which fake products are neither uploaded nor dispatched through our platform, and customers can shop without the fear of getting scammed. I'm in the e-commerce industry for the last 6 years, and I left my lucrative job of Pakistan Army to pursue my mission of making commerce trustworthy and convenient. We are about to launch, but we've already tested our concept with 9,000 customers, and we have devised a scalable and profitable operational and marketing strategy. And we plan to scale very fast with very low or no burn rate. Thank you. So with 10 seconds to spare. Mr. Khurram, if you can please text me the scores, and then we'll start with. All right, can we have the scores, please? So it's a 4 from Mr. Ahmed, a 5 from Mr. Sarfaraz, a 5 from Mr. Kamran, and a 5 from Mr. Khurram as well. Do we have any feedback remarks? Yes, very good, very concise, simplified the concept. Slightly थोड़ी सी details अगर आप और देते इस चीज इतनी सी detail देते कि वो जो आपका managers वाला concept है वो मुझे थोड़ा सा जरा कम grasp हुआ. बाकी otherwise तो जबरदस्त था. Thank you. सबसे पहले तो Thank you. दूसरा आई थिंक मैंने जब सुना तो मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो. यू डिड एक्सप्लेन समथिंग बट आई डोंट नो, इट डिडंट रेजोनेट विद मी. ठीक है, बट योर पिच वाज एक्सीलेंट. ठीक है, आपने तकरीबन सारी चीज़ें कवर की, which is very good. Then we can have an offline talk आप exactly क्या problem solve कर रहे हो, business centric. But as far as the pitch is concerned, it was perfect. Thank you. Saqib, why I give you 5? मैं पहले 4 दे रहा था, लेकिन 5 इसलिए because I know from day one
जब आपने पिच हॉट सीट की और उसके बाद से, सो देयर इज वेरी you know very big improvement. So usliye congratulations, you have amazing job in that regard. Thank you. However, as already mentioned, अभी भी चीज़ें हैं जो कि फिक्स होने वाली है. बिजनेस मॉडल का आपने थोड़ा सा और इम्प्रूव करे, हाउ यू आर मेकिंग मनी, ये क्योंकि आपके पास 10 सेकंड्स थे, वो 10 सेकंड्स आप वहाँ पे बता सकते थे कि एग्जैक्टली आपने बाकी सब कुछ बता दिया, ऐसे कैसे बना रहे हो, फिर बिजनेस मॉडल है क्या, वो थोड़ा कवर कर लेते हैं. प्रॉब्लम एज सरफराज मेंशन कि व्हाट वाई ये मॉडल क्यों आया, कि बायर सेलर से बायर वेंडर सेलर मॉडल क्यों, वो अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर ले फॉर समवन हु डजंट नो यू, तो वो और क्लैरिटी आ सकती है. लेकिन ओवरऑल अ वेरी गुड जॉब. थैंक यू. Thank you. So, मेरा feedback आपको ये, I gave you a 5 because you owned the room. I mean, the one thing when you give out the pitches, the confidence, your body language, and your articulation is very, very critical. And you did it perfectly. Now, content is something that as you give the pitches, you will learn and you can fix up. इसके मैं content को और किस तरह hone कर सकता हूँ. But the demeanor in which you articulated yourself and presented it, excellent. Thank you so much. Means a lot. So we'll have our last startup who has joined us virtually. Zishan, can you hear us? Zishan, are you there? Okay, so we'll move on from the hot seat pitches and towards the Q&A session. During the presentation, if you had any questions or regarding the feedback sessions, if anyone has any questions for our mentors, feel free to ask. I see a hand already going up. सर हम इधर ही आ जाते हैं यहाँ पे, ताकि एटलीस्ट वी आर मोर विजिबल ना, आ जाए. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. अस्सलाम वालेकुम जी, रेहान भट्ट है. सो मेरा सवाल, मासूमाना सवाल कामरान भाई से, कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इतनी इनोवेटिव नहीं हो पाती, इनोवेशन नहीं कर पाती, उसकी क्या वजह है? आप कह रहे थे कि क्योंकि, फिर देन यू सेड समथिंग एल्स. तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्यों लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इनोवेटिव नहीं होती. क्योंकि मुझसे सवाल बहुत दफ़ा किया जाता है, आपने भी एक दो दफ़ा किया है कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज बैठी हैं, ये नहीं कर सकती जो आप ये तिगड़म लेकर आए हो. बिल्कुल. तो ये ज़रा प्लीज़ इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि आपने क्यों कहा कि ये तो आपने कहा, वो बहुत ठीक कहा. आपके ख्याल में क्यों लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन नहीं कर पाती? वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, देखिए, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई बिलीव इज कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एज यू ग्रो, वंस यू, आपकी जब ग्रोथ होती है, सो आप पहले स्टार्टअप होते हो, 2 बंदे फाउंडिंग टीम है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फंडिंग मिल गई, आपने टीम बनानी, इवेंचुअली बिकम्स डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स आ गए, फिर डायरेक्टर्स आ गए, सो इवेंचुअली यू बिकम लाइक 300 400 500,000 5,000 की कंपनी बन गई. ठीक हो गया, डिफरेंट आपके प्रेजेंस भी हो गई मल्टीपल इसमें. इशू क्या आता है? इशू क्या आता है जब आप एक दफा फिर यू गेट, आपके देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर बिल्ड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन. तो होता ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, आई गिव यू एग्जांपल, मैं बहुत सी छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ये साथ ही बैठे हुए हैं. ठीक है, सो आई वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर and we were using LBS solution and we are providing the solution to our customers. अच्छा, जब इनके जो अकाउंट मैनेजर हमसे बात करते थे and all that, हम इनकी पेमेंट रिलीज करनी होती थी. नाउ आई वुड बी द फर्स्ट वन, मैं क्या आज मुझसे पैसे ले लो, लेकिन हमारे प्रोसेसेस ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे फॉर द फाइनेंस, फॉर प्रोक्योरमेंट, कि इट वुड टेक मंथ्स फॉर अस टू गेट दोस अप्रूवल्स एंड प्रोसेसेस बिफोर हम उसके जो है PO इशू होता था.
सो द प्रॉब्लम इज कि आप जैसे बढ़ते हो प्रोसेसेस वो आपको हाथ बांध देते हैं आपकी, सो आप इनोवेशन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपकी. दैट्स वाई स्टार्टअप हैज़ अ वेरी बिग एडवांटेज कि आप मार्केट डिस्ट्रप्शन तभी स्टार्टअप कर सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते. अच्छा, सम ऑर्गेनाइजेशंस दे डू, वो क्या करते हैं कि वो दे क्रिएट अ स्टार्टअप विद इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो डिस्ट्रप्शन तब कर सकते हैं अगर वो यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी विद इन अ कंपनी. ठीक है, एक आप तो यू कैन, सो दैट्स द ओनली वे आई बिलीव यू कैन डू सम इनोवेशन विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. इस पे आई वुड लाइक टू शेयर सम थॉट्स ऑन दिस, क्योंकि ये बड़ा एक ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे बुक्स लिखी गई हैं कि ब्लैकबेरी क्यों नहीं लेकर आ गया आईफोन, वो देखता रहा और आईफोन ने उसको फारिग कर दिया, नोकिया कैसे फारिग हो गया. इस पे आई फाउंड, एटलीस्ट टू माई एक्सटेंट, आई फाउंड द आंसर इन क्लेटन क्रिस्टनसन की बुक है हाउ विल यू मेजर योर लाइफ. उसमें उन्होंने उसको एड्रेस किया है. उसमें वो कॉन्सेप्ट लेकर आए फुल वर्सेस मार्जिनल थिंकिंग, कि जब आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं यू स्टार्ट थिंकिंग इन मार्जिन्स. जब आप स्टार्टअप होते हैं तो यू आर एग्रेसिव एंड यू हैव फुल थिंकिंग. तो ये हर इंडस्ट्री में, हर हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है कि जो, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि हमने अपनी इंडस्ट्री में भी देखा है कि जो लार्ज, इन माय प्रीवियस स्टार्टअप जो हमारी ब्रिटिश कंपनी थी, उसमें दुनिया की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया. उन्होंने कहा हम इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, वहाँ इतना रेड टेपिज्म है. आप छोटा सा स्टार्टअप हो, दे बॉट अस एंड दे सेड कि आप करके दें हमें. So the answer is full and marginal thinking. That's what I have found a reasonable explanation जो तकरीबन हर जगह अप्लाई होती है. अच्छा, इसमें आपने जो बात की ना, दूसरा तरीका यही है कि आप वो खरीद लो उस कंपनी को, जो कि फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ किया, इंस्टाग्राम के साथ किया. ठीक है, तो दैट्स अदर वे. उसको वैसे ही चलने दो. अगर आपने उसमें अपना VPN जाके बिठा दिया और अपने 4 लीगल कंप्लायंस बिठा दी, वो फिर वो भी वही बन जाएगी. ये भी एक प्रॉब्लम है. So that's what has happened to Instagram and eventually अब WhatsApp को भी हो रहा है. वो दोनों के फाउंडर्स eventually quit कर गए ना, because जो agreement था कि वो वैसे ही चलने दिया जाएगा, but eventually वो Mark Zuckerberg prevailed and they couldn't do a thing about it. So just a quick comment to add कि the larger you grow as an organization और आप जब एक corporate बन जाते हैं तो the more difficult it is to embrace change, because there are certain corporate practices and policies and frameworks that have brought you here where you are actually. So it's really hard to change things, especially drastically. अगर आपको लगता है कि कोई radical change करके हम कुछ करेंगे तो सब लोगों को पता है, यहाँ स्टार्टअप्स बैठे हुए, स्टार्टअप्स इज अ रिस्की अफेयर, राइट. तो जब एक बड़ा कॉर्पोरेट होता है उसके उसी किस्म के खर्चे, उसी किस्म की डिपेंडेंसीज, उसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है टू द बोर्ड. सो वो इस वजह से वो रिस्कियर डिसीजंस लेने में घबराते हैं. हेंस इनोवेशन किलर्स वो है, वो रेड टेप आती है और वो सारे प्रोसेसेस होते हैं. अच्छा, इसमें आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी, ओपन एआई के साथ क्या हुआ, सैम ऑल्टमैन के साथ. वो माइक्रोसॉफ्ट का इशू आ गया था कि उसकी हैड टू रिजाइन, फिर उसकी मेहनत करके उसको कहा भाई आ जाओ वापस, सॉरी ये हमने गलती होगी. तो या I'll add a couple of things to this. So Rehan, देखिए priorities change हो जाती हैं. When you're a large corporate, is your North Star getting more revenue or is it coming out with innovative products? Risk factors भी आ जाते हैं, culture भी आ जाता है. But one thing you have to remember: great people, great organizations, and great nations fail because they're great at what they do. They forget that there's another way and a disruptive way to do the same thing. And there's several examples on this. And they pivot a little too late in the market because they think कि जो हम कर रहे हैं यार इतना successful है, इसको तो कौन आकर disrupt करेगा? And then along comes a small player and disrupts them, and guess what? The original company doesn't even exist anymore. I think the best example on this is Netflix and Blockbuster. Blockbuster was so good at what they were doing and the expansion was going so well. And then 5 years down the line, after Netflix came in, they disrupted the whole market and came onto video streaming because courier costs were going up and cost of technology was coming down. So there's several factors where, but at the end of the day,
the drive that you have as a startup to do something, when you become a corporate, that drive becomes more towards revenue because you've got stakeholders, you've got investors, you've got boards to answer to. फिर उसकी वजह से क्या होता है, कल्चर आ जाता है, कल्चर आ जाता है तो फिर जी गवर्नेंस आ जाती है, फिर वो 50 चीजें और खुल जाती हैं. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Assalamu alaikum ji. Name is Waqar Hussain. My question is from all four of you. Not being successful entrepreneurs or successful startup runners or successful product developers, but your failures, where you have done a failure, किस point of time के ऊपर you realized कि the journey that you have taken आपको अब यहाँ पे wind up कर देना चाहिए, क्योंकि एक challenge जो मैंने ये learn किया है कि आपका स्टार्टअप बिकम्स योर बेबी, आपकी बहुत इमोशंस अटैच हो जाती हैं और जिसकी वजह से आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो चैलेंजेस होते हैं, जो रियलिटीज़ होती हैं, उससे डिस्कनेक्ट होके आप एक और दुनिया में चले जाते हैं. इट्स अ होल डिफरेंट एक माइंडसेट में आप चले जाते हैं. सो किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यू रियलाइज कि यार ये मैंने एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, भाई अब रुक जाओ, इनफ, अब इसके ऊपर मजीद टाइम, पैसा, इंटेलेक्ट, फोकस, टीम लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैं पिवट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल शो स्टॉपर की बात कर रहा हूँ. वो एक्सपीरियंस बताइएगा प्लीज. I'll share a personal experience here. आज से कोई 5-6 साल पहले, back in I think 2018, I met a person who, in fact, he was a friend. वो हम एक project में साथ में काम कर रहे थे. We became friends. He was absolutely passionate about committee system, जिसको ROSCA कहते हैं हम लोग. He discussed with me. I had the team, and it was a natural synergy के हम build कर सकते थे using our in-house team. और तो वो एक यूरिका मोमेंट होता है ना, जिस वक्त आपको आता है कि यार ये तो बस वो आपके एक ब्रेन वेव चल रही होती है, आपको लगता है कि मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदे की ज़रूरत है, बड़ा ये बहुत बड़ा मसला है, जो मैं निकलूंगा तो ऐसी तैसी कर दूंगा. वो समहाउ हम लोग उसी ब्रेन वेव को राइड किए और थोड़ा बहुत हमने मार्केट रिसर्च वगैरह की. उतनी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन हमें मार्केट से ये उसकी ज़रूरत नज़र आई. वी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोटोटाइप, MVP बनाने पे काम शुरू किया. बट व्हेन वी रीच्ड अ पॉइंट जहां हम उसको लॉन्च करने जा रहे थे, तो इट बिकेम क्लियर कि इसमें बड़े सिवियर रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं. और as mainstream as the committee system or ROSCA is in every single market, हर मार्केट में वो दुकानदार कॉपियां पकड़ के वो ROSCA कर रहे हो और कमेटियां लिख रहे होते हैं, but it is not a recognized or recognizable instrument when it comes to regulatory. So any financial system, हमने फिर उसमें थोड़ा सा एक flavor add करने की भी कोशिश की. We talked to a few banks and everybody refused कि this is too risky of an affair कि हम उसमें मतलब उसकी फाइनेंशियल रिस्क हमारा अलाउ नहीं करता कि हम उस तरफ जाएं. तो दैट वाज द पॉइंट. हमने प्रोडक्ट बना ली थी, MVP बना ली थी, हमने उसको टेस्ट कर लिया था. 1-2 मार्केट्स में लोगों को ऑन बोर्ड ले आए हुए थे. हमें प्रोसेस सारा बड़ा स्मूथली चलता हुआ नजर आ रहा था. हमने इवन उसको ये किया था कि लोग अपने अकाउंट्स से डायरेक्टली, यानी एक बंदा जो रॉस्का को होस्ट कर रहा है उसको सब लोग, जिसकी बारी होती थी उसको सब लोग ऑनलाइन IBFT करके ट्रांसफर भी कर रहे थे. हमने कॉन्सेप्ट सारा टेस्ट कर लिया. इट सीम्ड लाइक वर्किंग, बट देन स्केल नहीं हो सकता था बिकॉज रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स ऐसे थे कि वो हम उस चक्कर में नहीं पड़ सकते थे. वी हैड टू शेल्फ इट. जी, इट वाज फाइनेंशियल सर्विस राइट एट द एंड ऑफ द डे. एंड उसके लिए स्टेट बैंक, हमारे रेगुलेटरी के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा व्हीकल नहीं है जो इस यूज केस को सर्व कर सकता है. EMIs हैं, EMIs कैन कैरी वॉलेट्स, but EMIs cannot carry the risk of individuals involved in. Sorry, NBFI वो lending के लिए होते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस. We were not lending with it. It was a common pool ना, जो कमेटी सिस्टम सब लोग एक बंदे को दे रहे हैं फिर अगले को दे रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा था, लोगों को भी समझ में आ रहा था. बट रेगुलेटरी रोड ब्लॉक ऐसा आ गया कि वी डिसाइडेड कि आज
हमने किया ना, हमने उस जमाने में हम बैंक अल फलाह के साथ भी बात कर रहे थे, उस हमने NRSP बैंक के साथ भी बात की। ये एक माइक्रो फाइनेंस बैंक था और एक फुल सर्विस बैंक था। नोबडी वाज विलिंग टू टेक द रिस्क, तो दैट्स हाउ। सो आपका मेन फैक्टर था रिसर्च लैक कर गई। हमारा ये एक रिसर्च में ये एक एलिमेंट था जो हम लैक कर गए, कि हमें रेगुलेटरी की तरफ जाना चाहिए था। हमने मार्केट रिसर्च की, कंज्यूमर कस्टमर साइड पे बिल्कुल की। इवन उसमें हमने उन लोगों के ऊपर भी रिसर्च की जो ये कमेटी होस्ट करते हैं मार्केट में। आपको पता है ना, जो कॉपी लेके चल रहा होता है वो भाई एक बंदे की जिम्मेदारी होती है। इसमें वो भी फैक्टर था कि वो बंदा पैसे बना सकता था जो बंदा कमेटी होस्ट कर रहा है, एंड दे लव्ड द आइडिया। बट दिस एस्पेक्ट दैट वी ऑब्वियसली मिस्ड led to a complete closure. One is different. लेकिन एक रियलिटी हर किसी के साथ रहती है हमेशा, वो है पैसे। जब आपका प्रोडक्ट पैसे ना बना रहा हो और आप बर्न कर रहे हो, तो आपको बंद करना ही पड़ता, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरे ख्याल है बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, और 2 प्रोडक्ट्स जो मैंने शायद आज आपको बताए ये रिलेटिव सक्सेसेस हैं। सो फॉर मी आई थिंक, हाँ, पैसे जब खत्म हो जाते थे, जब नजर आ जाता था कि इसने इसने पैसे नहीं बनाने, बंद कर देते थे। और दूसरा, एक टॉय साइकिल से मैंने स्टेप बैक किया था कुछ अर्सा पहले। आई थिंक इट वाज नॉट एक्साइटिंग इनफ फॉर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो जो पैसे बना रही थी, जो प्रॉब्लम्स थे, दे वर नॉट चैलेंजिंग इनफ एंड आई वांटेड टू हैव अ ब्रेक। तो वो मैंने एक ब्रेक शायद लिया था अपनी जिंदगी में। That's it. एक छोटी सी चीज के, ये एनालॉजी थोड़ी सी गलत है, कि स्टार्टअप को कभी अपने बेबी के साथ हम वो ना करें, बिकॉज यू नेवर सेल योर बेबीज, राइट? सो 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 एंड यू बिल्ड अ स्टार्टअप टू इवेंचुअली टेक एन एग्जिट आउट ऑफ इट, सो यू नेवर टेक एग्जिट्स आउट ऑफ योर बेबीज। ओके, चलें। यहाँ पे बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि एक तो फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फेल अर्ली के वाले जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार फेल अर्ली इज, सो इट्स एन आइडियल थिंग कि अगर आप पहले ही फेल कर दो, पहले उसको पिवट कर दो, पहले छोड़ दो, बजाय इसके कि आप उसके पीछे पड़ जाओ और ऑल दैट। मेरे केस में फाउंडर इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। हम उस टाइम पे आइडिया, मेरे साथ मेरा प्रॉब्लम ये, यार आई ऑलवेज कम विद न्यू आइडियाज विच आर वे अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले वाले आइडियाज मुझे बड़े पसंद है। और उसकी सबसे, जो थैंक्स टू अ मूवी कॉल्ड बैक टू द फ्यूचर, आप में से किसी ने देखी हो, आई डोंट नो, इट्स अ टाइम ट्रैवल ऑल दैट। आई वाज वेरी fascinated as a kid, यार बड़े फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, दिस एंड दैट, यू नो। So back in 2015, जब उस time we, you know, when I applied for FI and we started working on it. So my idea initially was that of smart homes. I mean, it's like it's a very cool thing back in the day. और उस पे ही सारा वर्किंग, सारी असाइनमेंट, सब कुछ, सारा कस्टमर डिस्कवरी नॉलेज। लेकिन थैंक्स टू FI, I would again say it was such an amazing program. It still is. It's been better than before. उस टाइम उस टाइम पे ही समझ आ गई थी कि यार इट्स नॉट अ मस्ट हैव थिंग, इट्स अ शुड हैव, और इट्स वेरी बहुत इलीट क्लास की वो है जो इनको शायद ये चाहिए वो प्रोडक्ट। यार वो अपने मोबाइल से आप अपनी लाइटें ऑन कर रहे हैं, आप अपने फैन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को कर रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये गलत जगह पे जा रहा हूँ मैं। एंड देन आई क्विट दैट आइडिया। उसी टाइम उसको शेल्फ किया, केम अप विद न्यू आइडिया, एड टेक में हमने स्टार्ट किया, सारी असाइनमेंटें दोबारा की जो पिछली हमारी जो उसमें की थी। सो अगेन, सो मैं बचत हो गई, खर्चे खर्चे वगैरह नहीं हुआ, लेकिन टाइम अलबत्ता मेरा लगा उसमें। एंड सो अगेन मैं ऐसे लेसन यही लर्न हुआ है कि यार आप जितना जल्दी अर्ली फेल हो सको ज़्यादा अच्छा है। और इमोशनल, जो कम्प्लीटली एग्री, इट्स यू शुड नॉट थिंक ऑफ स्टार्टअप एज योर बेबी। उसने एंड में अगर इमोशनल आपका अटैचमेंट हो जाती है, इट्स वेरी डेंजरस। जी खुरम साहब, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस क्वेश्चन, देन वी कैन से other questions. Yeah, what I would say is my experience, and over the years, what I've learned is look at a business as a business. Set some KPIs for yourself, and पहले ही आप sort out कर लें कि यार इतनी हद तक मैं जाने को तैयार हूँ. And then draw out the line of, this is where I turn back. इसके बाद अब risk मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है.
So you need to, like you said, Kamran, early failures is a must. And you need to draw out some goals for yourself जो आज हम चारों ने आपको अपने तरीकों से कहा है कि यार अपने जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे ना कि यार ये मैं करना चाह रहा हूँ, and then you have to assess yourself on the way there. Am I getting there? Am I moving forward? Because like Einstein said, the biggest insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आप कंपनियां बंद करने की क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? Exactly. ठीक है, नहीं नहीं चले कमेंट बाद में कर लेंगे, इसको ऑफलाइन ले लेते हैं. वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस एज वेल. हाँ जी. Kamran, sorry to interject. I need to drop off. I have another commitment in 5 minutes. Thank you, All right. everybody, for the time and the patience to go through everything. And I hope didn't offend anyone. But No, thank you very much, Pranab, for your time, and I hope the startups, you had a good time yourself, and startups had a very amazing time. So round of applause for Pranab. Thank you, Jim. Thank you, Jim. Thank you Thank so you, sir. much. Much appreciated. Thank you. Okay. अच्छा. सही कह रहे हैं जी. Betting against the market is never a good idea. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली सर फराज के लिए है. आई होप आई गॉट द नेम राइट. तो आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स के लिए आपने CRMs ERPs टाइप कोई चीज़ पे काम करना शुरू हो गए थे और फिर वो एक्सपैंड होके पूरी एक प्लेटफॉर्म बन गया. आप अगर आप इस स्पेस में आपको EMRs या EHRs का आइडिया होगा और एपिक का तो फिर बहुत ज़्यादा ही आपको आइडिया होगा, एपिक सर्नर का. आप लोग उस स्पेस में घुसते हुए, अब जैसे हमने बहुत डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया था US के अंदर, और ये डॉक्टर्स जो पिछले 10 20 30 साल से इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे थे, जब से उनके साथ इंटरेक्शन है, कहते हैं हम आज तक कुछ नया सीख रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि एक ट्राइबल कल्चर होता है कि वन डॉक्टर टू अनदर आपको सिखाते हुए भेजता है, क्योंकि देयर इज नो ट्यूटोरियल और गाइड टू इवन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एपिक और सर्नर पूरी तरह. तो आप लोगों के लिए how could you embark on building something so complex and so large, जो Epic की तरह कंपनीज जो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने अब क्या बनाया है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर, और आप लोगों के लिए कंप्लायंसी इश्यूज क्या आ रहे थे, क्योंकि एपिक और सर्नर मतलब वो इतने कॉम्प्लेक्स उनके इश्यूज होते हैं, जो एक्सेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसका पूरा एक एरिया होता है जो उन्हें कवर करना होता है. तो जस्ट इवन स्टार्टिंग आउट ऑन दैट जर्नी आई कैन अंडरस्टैंड कुछ छोटे स्केल से तो इट्स फाइन कि आप कोई रिकॉर्ड्स मैनेज कर रहे थे, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट टू गो टुवर्ड्स अ होल हॉस्पिटल की ERP टाइप कुछ डेवलप हो जाए, तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के, जो आपके बहुत सारी और चीज़ें होती हैं प्राइवेट हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, आप लोगों ने इसको कैसे टैकल कर रहे थे? एंड इज इट एन EMR एट दिस पॉइंट, या इज इट स्टिल, वुड यू नॉट कैटेगराइज इट एज एन EMR? So, यार, it's a very good question. यार, we were developers. मैं भी डेवलपर था, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड. मेरा जो को-फाउंडर था वो भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का बंदा था. और आई थिंक हम वही कर रहे थे जो आज हम एडवोकेट कर रहे हैं. मैं जो इधर बैठा एडवोकेट कर रहा हूँ ना, यार क्विकली मार्केट में जाओ एंड लर्न फ्रॉम द मार्केट एंड लर्न फ्रॉम योर कस्टमर्स. मेरा हाल है, हमने बिल्कुल वही किया. हमें कोई आइडिया नहीं था क्या रेगुलेशन होती है, हमें कोई आइडिया नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड क्या बला होती है. हम वो बना रहे थे जो हमारा डॉक्टर सामने बैठा हुआ या जो हमारा कस्टमर सामने बैठा हुआ हमसे मांग रहा. और यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर जिन जिन की भी स्टार्टअप्स हैं उनको अपना होमवर्क करना चाहिए. हमने लेट किया. हमने हमें प्रोडक्ट बेचते हुए कोई मसला नहीं होता था, कोई नहीं पूछता. पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं जो कि EMRs के अराउंड कोई भी रेगुलेशन रखती हो. ठीक है, वी क्लोज दिस स्टार्टअप अ फ्यू इयर्स बैक. उसके बाद क्या हुआ मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है,
It was acquired by Cognitive Health International. हम अभी उन्हीं का हिस्सा हैं. And our focus right now is the UAE market and the US. ठीक है. So हम वो ही करते थे यार. हम जाते थे, वो कहता था, डॉक्टर कहता था मुझे इस तरह का ये बना दो, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये बना दो. अब जब इनिशियली इट वाज जस्ट अ क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम. बाय चांस वो जो डॉक्टर था जिन्होंने हमारा क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ था, दे वर आल्सो ओपनिंग अ हॉस्पिटल. उन्होंने कहा यार ये हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या आप इसका भी सिस्टम हमें दे सकते हो? तो वो एक डेवलपर्स का नेचुरल होता है कि यार बनाना तो मेरे लिए कोई मसला है ही नहीं. तो हमने कहा हाँ जी, क्यों क्यों नहीं, आपको वो बना देंगे, पैसे उसके ज्यादा होंगे. उन्होंने कहा पैसे ज्यादा होंगे तो ठीक है देंगे. मैंने कहा, फिर बनाएंगे. तो वो जो कुछ मतलब बताते थे हम बनाते थे. कुछ सिस्टम्स होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर मस्ट हैव होते हैं, जिस तरह से इन्वेंट्री हो गया, जिस तरह से जो आपने बिलिंग करनी है, इनवॉइसिंग करनी है, लेजर हो गया. ठीक है. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद ऑल ऑफ दोज एंड देन वी स्लोली बिल्ड अपॉन दोज. पहले उसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्लिनिक वाली फीचर्स हम लेके आ गए EMR के रिगार्डिंग, राइट. एंड देन स्लोली स्लोली पता चला, एक नए हॉस्पिटल में जाते थे, वो कहते थे यार हमारे पास तो वी आर टॉकिंग विद शौकत खानम दीज डेज. उनका हमारा जो EMR है ना, उसमें वर्क फ्लोज बड़े अच्छे बने हुए हैं, IPD में ये होता है, फलाने में ये होता है, फलाने. तो पहली दफा सुना होता था हमने ये. कहते थे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वो भी आपको कर देंगे. और फिर वापस जाते थे, अपने हॉस्पिटल वालों के कुछ फ्रेंड्स बनाए हुए थे, कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स बनाए हुए थे, उनसे पूछते थे जी अच्छा जी इस IPD के अंदर क्या होता है, व्हाट्स द वर्क फ्लो ओवर हियर. वो हमें वर्क फ्लो बताते थे. वी वर वेरी लकी, वी गॉट इनटू अ पार्टनरशिप विद शफा कंसल्टिंग. शफा कंसल्टिंग का काम ही है बेसिकली कि वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स को बनाने में हेल्प करता है कि यार हॉस्पिटल बनाना कैसे है. उनके CEO थे सुहेल सिद्दीकी साहब उस वक्त. वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. हमने बड़ा रेगुलरली उनके पास एक प्रोसेस से क्वेश्चंस लेके जाना. और सो आई थिंक द की टेक अवे राइट नाउ फॉर वुड बी, एक तो ये कि वी वर एबल टू टॉक टू आवर कस्टमर बाय आवरसेल्व्स. वी न्यू व्हाट दे वर लुकिंग फॉर एंड वी वर एबल टू बिल्ड दैट ऑफ ऑफ देयर फीडबैक. जो उन्हें चाहिए था बना के ले जाते थे उनके पास. एंड देन वहां से फिर हमने, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चंस. इफ इट नॉट तो दोबारा पूछो. असल में मुझे लगा था आपकी प्रेजेंस यूएई में जिस टाइम पे आप थे तो तब थी. तो वहाँ क्योंकि जैसे रिसेंटली हमने ट्राई करने की कोशिश की थी, हम बात करें क्लीवलैंड क्लिनिक के साथ, जो हम अपना हेल्थ टेक का काम कर रहे थे, तो हमें पता चला कि वो लोग एपिक रन कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरी यूएई के अंदर एपिक नहीं यूज़ हो रहा होता. आपके DHA में भी एपिक यूज हो रहा है? कहाँ? तो भाई हेल्थ अथॉरिटी भी एपिक यूज मतलब रिसेंटली शुरू हुआ है ये, एटलीस्ट जितना हमारी इंटरेक्शन हुई थी जिन डॉक्टर्स के साथ, तो दे हैड कुछ बिस्पोक सिस्टम्स यूज हो रही होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर वहाँ जो हैं, लेकिन जो एक मेन प्लेयर जो हमें मिला वो एपिक जो यूज करता वो वही था. तो अब इसके अंदर मैं बेसिकली यही जानना चाह रहा था कि आप लोग जब उस स्पेस में थे, अगर वहाँ ये लोग एपिक की तरह चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको कैसे नेविगेट किया था उस एनवायरनमेंट को? एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स ना, जो एपिक भी इतना बड़ा हो गया, वो क्यों हो गया? उस वो इनहेरेंटली एंटरप्राइज प्रोडक्ट बनता ही इस तरीके से है कि यार मैं आपके पास आया, आपकी X रिक्वायरमेंट थी. मैं जब इनके पास गया तो इनकी Y रिक्वायरमेंट थी. जब मैं इधर आया तो वो Z हो गई. ठीक है. मैं स्लोली स्लोली वो सारी इनकॉर्पोरेट अपने सॉफ्टवेयर में कर देता हूँ. एंड देयर आर ऑप्शंस टू टर्न देम ऑन एंड टर्न देम ऑफ. और वो एपिक भी एक दिन में बड़ा तो नहीं हुआ ना. वो स्लोली 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 अब वो इतना बड़ा जाइंट बन गया है. एंड अब आई एम नॉट श्योर व्हाट सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, बट जो हम काम करते थे, वन ऑफ द की थिंग्स दैट वी वांटेड टू डू वाज टू बी एबल टू मतलब इंटीग्रेट विद एपिक एट वन पॉइंट इन टाइम. ठीक है जी. वो होना चाहिए अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर एबल टू लाइक क्लेम अ फ्यू इंटीग्रेशंस, तो आपका काम काफी ज्यादा आसान है. वो हमारी लिस्ट में था एक पॉइंट पे, लेकिन जब हमारे डॉक्टर से बात हुई तो वो कहते हैं एपिक हमें खुद ही अभी इतना टाइम लग रहा है समझने में, अगर आप उसमें इंटीग्रेट हो गए तो फिर हमें. इस पे बात कर लूंगा. अगर आप इंटीग्रेशन को सेटअप करना चाहते हो तो इट्स रिलेटिवली इजी. हवा बहुत बड़ा लगता है, अंदर इतना कुछ भी नहीं है. HL7 प्रोटोकॉल होता है. आप HL7 पे थोड़ा बहुत काम किया होगा होपफुली आपने, और अगर वो आपने किया हुआ है तो यू आर गुड, और आपकी इंटीग्रेशन बड़ी इजीली हो जाएगी उसके साथ. मैं आपको थोड़ा सा उस पर गाइड करता हूँ. और आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन कैसे कंटिन्यूड रखी थी देखो व्हेन मैपिंग आउट हाँ प्रोसेसेस? बिल्कुल बिल्कुल यार. देखो आप 100 बातें कर लो, और जो असल मोटिवेशन होती है ना एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन शिट हिट्स द फैन ना, तो जो असल चीज है ना वो पैसा ही होता है यार.
अगर आप बना रहे हो पैसे, यू विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट। अगर आप पैसे नहीं बना रहे ना, तो बस फिर ये मैट्रिसेस एम्प्टी हो, मेरे लिए तो नहीं मैटर करते, बट एवरीवनस डिफरेंट। सो थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, My question is specifically for Sir Kamran. You mentioned sign up forms and how we should just share them online and companies can sign up for that. But my question is that we are a really small company right now. In fact, we don't have any customers and we're going to be completing our MVP this month. So I think it's pretty difficult for us to imagine कि हम लोग बस एक form upload कर देंगे और online उसकी organically reach जो है वो ज़्यादा होगी. So is there anything that we can do to help boost that reach and make sure कि actually लोग sign up करें और हमारी कंपनी को ट्रस्ट करें हमें join करें? आपको जो मैंने साइन अप फॉर्म की एग्जांपल दी, दैट इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट। मैं जो एमवीपी की एग्जांपल्स आपसे शेयर की, वीडियो एमवीपी इज वन वे ऑफ डूइंग इट। आप एक वीडियो बना लो बहुत सिंपल, और उस वीडियो में मे बी यू कैन शेयर सम कुछ एनिमेशन दिखाओ एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो, ठीक है? आप उसको सिमुलेट भी कर सकते हो। तो एक वीडियो बना के आप वो उसको ही शेयर कर दो अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, बजाय इसके कि चलो साइन अप फॉर्म मत करो। लेकिन आप जब तक वो उसको उनको समझ नहीं आएगी, बजाय इंस्टेड ऑफ यू रीचिंग आउट एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू, यहाँ से बैठ के बटन प्रेस करके एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल यू वांट। आपने टारगेट, आपने उसको भेजा, ठीक है, और वहां से रिस्पॉन्स, अब वो रिस्पॉन्स आएगा तो इसका मतलब ये कि यस वो इंटरेस्टेड है। रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई नहीं आया, ठीक है, उस पर फिर इसका मतलब ये कि दे माइट डोंट हैव टाइम, उनको पता ही नहीं है आप कौन है, और एक मेल इस तरह आ गई रैंडमली। तो देयर आर अदर वेज टू टेस्ट, आप अदर वेज टू टेस्ट आप उसको कर सकते हैं। can I ask you what your product is? Sure. So our product is basically a conversational AI tool जो basically अगर organizations के अंदर transparency और trust का बहुत issue होता है. So what we do is that our bot, it talks to the employees in a company and then it extracts data from them कि कोई किसी की अगर turnover intentions हैं या कोई मतलब कोई let's say depression face करे etc. बहुत सारे issues हो सकते हैं, and that data is compiled and then sent to the HR anonymously, and then we tell the upper management कि ये major issues हैं, this is how you can tackle them, and it improves over time as अच्छा, well. एक सजेशन जो मैं अब आजकल कुछ दोस्तों को देनी शुरू की है, कुछ खुद भी मैंने उसको यूज किया है, मैं आपको देता हूँ, देखते हैं कि सो इफ यू वांट टू टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट, यू वांट टू सी कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बड़ा आसान तरीका ये है कि आप उसका ऐड लगाएं, ठीक है। या आप जिस तरीके से भी उसको बेचना चाहते हैं उस तरीके से उसे बेचना शुरू कर दें, पीछे कुछ भी नहीं होगा। आप जिस तरह आजकल लोग ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, दिस इज समथिंग जो कि मैं मतलब बड़ा फ्रीक्वेंटली देखता हूँ। एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसकी खूबसूरत सी पिक्चर्स बनाते हैं, देव गॉट जीरो इन्वेंट्री, दे स्पेंड अ फ्यू डॉलर्स ऑन दैट, ऑन द एड, ठीक है, वहां से वो देखते हैं मेरे पास कितनी लीड्स आ रही हैं, मैं $100 लगाता हूँ, अगर मेरे पास $200 का प्रॉफिट वाला ऑर्डर आ जाता है तो आई विल गेट दैट इन्वेंट्री, मैं उस इन्वेंट्री को खरीद लूंगा, और अगर वो नहीं आता तो फिर मैं वो नहीं करूंगा। इन योर केस, इफ आई वर यू एंड आई वांट टू चेक के मेरी चीज बिकनी कि नहीं बिकनी, मैं एक लैंडिंग पेज बनाऊंगा, एक सिंपल लैंडिंग पेज। आप चैट जीपीटी को जाके कहो कि मुझे एक लैंडिंग पेज बना दो, आप मिड जर्नी को जाके कहो कि मुझे अच्छे से ग्राफिक्स दे दो, ठीक है, यू कैन बिल्ड दिस इन 1 day विद नो टेक्निकल नॉलेज, राइट? आपका वो बन गया, आपकी डोमेन के ऊपर वो चढ़ गया, साथ में आपने एक एड रन कर दिया, गूगल सर्च ऐड लगा लें, फेसबुक ऐड लगा लें, टारगेट करें ऑडियंस को, लेके आए, देखें कितने लोग उसके ऊपर आते हैं, और वहीं पे पेमेंट का भी एक बटन दबा दें, बटन बना दें। दैट कैन बी ब्रोकन एज वेल, बट दैट वैलिडेट्स द पॉइंट कि जब कोई बंदा आपके पास आता है तो वो आपको पे करने को तैयार है। इसके अंदर मेरा अब क्वेश्चन है कि अब जिस तरह हम लोग अगर B2B हैं एंड इट्स लाइक स्लाइटली एक्सपेंसिव आई थिंक फॉर अ कंपनी टू अडॉप्ट अस इफ इट्स $7 पर यूज़र, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि गूगल ऐड आई थिंक थोड़ा एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन है फॉर अस कि मतलब हम लोग अप्लाई करें और वो हमें कोई एक रिज़ल्ट दे तो उस केस में हमें फिर क्या करना चाहिए? You can try LinkedIn Sales Navigator. Okay. उसको आप एक्सप्लोर करें, फर्स्ट मंथ इज फ्री, उस पे यू कैन एक्चुअली it'll sift out the relevant audience for you, जिनको आप पर्सनलाइज यानी यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू इन मेल, आई थिंक उसको कहते हैं मैसेजिंग को, एंड यू कैन जनरेट लीड्स आउट टू दैट। वो आप बिल्कुल अपनी टारगेटेड ऑडियंस
निकाल के आपको दे देगा एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ फेयर रन। अदरवाइज भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। फर्स्ट मंथ तो वैसे ही फ्री है, उसके बाद आई थिंक जो उसका बेस प्लान है वो 13-14 हज़ार रुपए का है पर मंथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जनरली हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि यार मेरे पास प्रोडक्ट है नहीं, मैं क्या करूंगा, उनके पास जाके बेइज्जती हो जाएगी या कुछ हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये मैं भी इसी जर्नी में से गुजरा हूँ। अभी भी कई जगहों पे जाने से डर लगता है। लेकिन आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स ना हमें वो डर अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि अच्छा, आई एम गोइंग टू दिस पर्सन इन ऑर्डर टू सेल समथिंग दैट आई डोंट हैव। और वो एक पॉइंट के ऊपर जाके अगर वो सक्सेसफुली उसको मैं यहाँ पे ले आया कि यार वो ही इज इंटरेस्टेड इन एक्चुअली सीइंग दैट प्रोडक्ट, एंड वो जाहिर अपना टाइम दे रहा है, मसरूफ बंदा होगा, तो इसका मतलब है कि अच्छा देयर इज समथिंग इन इट। और यही मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको जवाब देना बंद कर दूंगा। ठीक है। और फिर हमें लगता है कि यार नहीं, ये तो हो सकता है अगर मैं 1 साल मेहनत करके इस प्रोडक्ट को बना के इसके पास जाता तो ये मैं सेल करके निकलता यहाँ से, तो दिस इज आई एम लूजिंग अ कस्टमर, राइट। ये हमारे ज़हन में बातें आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एवरी वन अ ह्यूमन बीइंग, एवरी वन अंडरस्टैंड्स। यार ये बंदा हाँ 1 साल पहले आया था, इसने कहा था प्रोडक्ट डेमो दूंगा, चलो कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, मुझे तो प्रोडक्ट आज भी चाहिए, आज भी इसे डेमो ले लेता हूँ। तो डोंट शाई अवे फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, दे विल हेल्प यू be at a better place as a startup. टू ऐड फर्दर टू दिस पॉइंट, जरा कभी आप जाके ना ज़मीन.com पे ऐसे ही कुछ किसी भी सेक्टर को सिलेक्ट करके सर्च करना। मोर देन 90% ऑफ द एड्स आर placed there by, no, not fake, but placed there by property dealers, real estate agents. अब हाँ, अब उनमें से आप मेजॉरिटी को कॉल करोगे तो वो उनकी ना वो कॉल बेट्स होती हैं कि आपको इतना अजीब किस्म का सस्ता रेंटल आप ढूंढ रहे हैं, तो इतना सस्ता रेंटल लिखा हुआ होगा, प्राइस है, तो वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे होते हैं कि आप उन्हें कॉल करें। ओके, आप कॉल करेंगे मुझे ये वाली चाहिए, वो तो सर कल बिक गई, मैं आपको और ढूंढ देता हूँ। तो दैट इज व्हाट दे डू। ये जो अभी सरफराज ने आपको बताया है कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, ऐड लगा के बैठे हुए कि लोग कॉल करें, कॉल आएगी, लीड जनरेट हुई, लीड आ गई तो उसके लिए ढूंढ के देते सही है। अच्छा, ये जो आपने एग्जांपल दी ना, सो एग्जैक्टली हाउ रियल एस्टेट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, यही टैक्टिक होती है। आपके पास जो है, लेट्स सपोज आपके पास एक लैंड है E11 में, ठीक है, 11 में आपके पास एक प्लॉट है, तो वो एड E11 में भी लगेगा, वो D12 में भी लगेगा, वो जो है वो इवन रवात में भी लगेगा। हाँ, रवात, अब रवात में अब तो दैट्स हाउ वो खेलने का यही तरीका होता है, बड़े बड़े तेज होते हैं। ओके, थैंक यू। बट वो जो कह रहे हैं ना कि वो आप अपना जो शर्म नहीं होनी चाहिए बेचने में, मतलब ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगला बंदा क्या कहेगा, नहीं चाहिए भाग जाओ, तो खत्म, इसमें कोई नो लव लॉस्ट। ठीक है, चलो। सो आ जाएं, आप एंड करें सेशन को। गुड जॉब सानिया। सानिया के लिए तालियां हो जाएं, शी इज फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। Thank you, sir. No worries. Thank you very much for joining us to our startups as well as our esteemed panel. Mr. Khurram Agha has left, but we're very grateful to him as well for joining us. And I hope there were a lot of takeaways from the session, even though the startups that pitched were a few, but the lessons are for everyone. Thank you so much, sir. Hope to see you again at NIC very soon. Thank you for taking out time.